हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बायोकेमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट एज वेल एज कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बायोकेमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एंजाइम्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आर टॉपिक एंजाइम्स। Prior to an enzyme, we must know what we mean by catalyst. So catalysts are defined as substances which enhance the rate of reaction without themselves consumed or undergoing any kind of permanent change during reaction, and thus they are required in very small amount. So there are two or three words, they are very important. First is that they enhance rate. Second, simply they participate, they are not consumed, and thus the requirement is comparatively very less. तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल या फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे वो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन हो चाहे बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन हो, उसको एनहेंस कर दे, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स व्हाट यू वांट टू से इज दैट कि अगर कैटलिस्ट ना भी हो, देन ऑल्सो reaction A may proceed in a direction of B because the delta G0 for this reaction could be negative, and A will keep on converting into B as we have studied in thermodynamics until an equilibrium is achieved. Equilibrium would be when forward rate would be equivalent to backward rate, उससे हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। सो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी तब तक जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आए। जब कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, यानी यू स्टार्ट विद 100% सबस्ट्रेट ए, इट विल कीप ऑन कन्वर्टिंग इनटू बी, लेट्स से 90 10% conversion, 20, 30, 40, 50%, it will keep on converting. It will keep on converting until the forward rate is equivalent to backward rate, and whenever it will happen, we will see that reaction has been attained or reaction has been completed. रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुकी है, तो रिएक्शन को कंप्लीट माना जाएगा। पर इस इक्विलिब्रियम को अटेन करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में भी वेरी स्लो। पर कैटलिस्ट ऐड करने पर उसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में, यानी सेम इक्विलिब्रियम को अचीव होने में जो बहुत ज्यादा समय लग जाता था, अब कंपैरेटिवली बहुत कम लगेगा। दैट्स व्हाई वी सी दैट कैटलिस्ट दे एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन, they simply participate in a reaction, they are not consumed, वह कंज्यूम नहीं होते। The function of catalyst produced by biological system, often referred to as biocatalyst, is very much similar to a catalyst. That is, whether catalyst or biocatalyst both enhance the rate of reaction, दोनों के दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते, इक्विलिब्रियम को अचीव करने में लगने वाले समय को कम कर देते। द टाइम ड्यूरेशन required to achieve equilibrium is decreased. Now, there are some differences, there are slight differences between catalyst, which we often use in chemistry, and biocatalyst, which are a product of biological system. There are minor differences. जो नॉन एंजाइमेटिक कैटलिस्ट होते हैं,
These are most often metal catalysts. These could be silica, alumina, zinc, etc. They accelerate the rate of reaction of conversion of substrate into a product. But these non-enzymic catalysts, they are comparatively non-specific. That is, same catalyst can participate in multiple reactions. They are not specific to a particular reaction. So, they are non-specific. And second, inhibitor of such catalysts are also non-specific. So, themselves they are non-specific, and the inhibitors are also non-specific. And most often you will find that inhibitors are some kind of chelators. Inhibitors क्या हैं? So these are some kind of chelators which hold the metal ion. For example, if you use a EDTA, it will hold a calcium ion, and wherever a calcium ion was playing a role of catalyst, now it will not able to play a role of catalyst. Or various divalent cations, they can be inhibited by a chelating agent EDTA. As compared to the catalyst, biocatalyst, that is enzymatic catalyst, they are substrate specific as well as stereo specific. They are substrate specific as well as stereo specific. That is, they are having a high degree of specificity. They first recognize their substrate. ये मेरा substrate, उसको recognize किया उसने. अगर वो कुछ दूसरे तरह का substrate है, ग्लूकोज को recognize करने वाला एंजाइम, वो ग्लूकोज को पहचानेगा, वह अमीनो एसिड को या सुक्रोज को नहीं recognize करेगा. Another, they are not only substrate specific, they are also stereo specific. And what we mean by stereo specific? That if an enzyme is recognizing a glucose, and in glucose specifically, if it is recognizing a D-glucose, it will not recognize L-glucose. So not only they are substrate specific, but they are also stereo specific. And the inhibition or regulation is also very specific. It is not like the inorganic catalyst where the inhibition is non-specific. So there are some specific inhibitors or activators. There are, in general, could be referred to as regulators. So major differences: stereospecity and the substrate specificity. That is the major difference. That is the underlying difference जिसकी वजह से हम कैटलिस्ट और बायोकैटलिस्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. उसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कैटलिस्ट पीएच से या टेम्परेचर से उनके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जबकि बायोकैटलिस्ट के ऊपर पीएच का, टेम्परेचर का और सॉल्वेंट का, इन सब का बहुत ज्यादा कैटलिटिक एक्टिविटी पर फर्क पड़ता है. सो कमिंग टू द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंजाइम्स. हर एक लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंजाइम. फर्स्ट, दे एनहांस the rate of reaction by forming multiple weak interaction with a substrate. So rate को enhance कैसे करते हैं? तो हम कह रहे हैं कि ये लेट्स से सबस्ट्रेट है, एंजाइम उसके साथ कई सारे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से एसोसिएट होता है, और फिर देखा जाता है कि ऐसा होने पर अब जो सबस्ट्रेट ए है
उसका बी में कन्वर्जन की रेट है वह तेजी से बढ़ जाती है इफ एंजाइम इज देयर। तो सबस्ट्रेट की जगह पर वी आर यूजिंग अ टर्म ए। सो दे एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय फॉर्मिंग अ मल्टीपल वीक इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट। हाउ they increase the rate of reactions? We generally say that they decrease the activation energy. We will come to this point later on in next slide, that the energy which is required in a substrate to attain a transition state is referred to as an activation energy. But if an enzyme is there, they will provide an alternative path जहां से reaction को complete कराया जा सकता है। अब activation energy की requirement comparatively कम है। If enzyme is there, enzyme if it interact with a substrate by forming a multiple weak interactions, then the requirement of activation energy is comparatively very less. Another important property of an enzyme is that they do not disturb equilibrium. वह इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते। यानी ए टू बी का इक्विलिब्रियम लेट से के इक्विलिब्रियम 10 है। के इक्विलिब्रियम 10 है मतलब रिएक्शन है वो तब तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती जाएगी जब तक कि 10 टाइम्स सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। इधर की तरफ 10 टाइम्स तो इधर की तरफ 1 टाइम कन्वर्जन। उसके बाद हम कहेंगे रिएक्शन है वह कंप्लीट हो गई है। इस इक्विलिब्रियम को के इक्विलिब्रियम चाहे 10 है या के इक्विलिब्रियम 100 है या के इक्विलिब्रियम 1000, वॉट एवर अ के इक्विलिब्रियम इज देयर, के इक्विलिब्रियम को अटेन करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है अगर एंजाइम वहां नहीं है। पर एंजाइम अगर प्रेजेंट है उसी इक्विलिब्रियम को अचीव करने में कम समय लगता है। यानी वेदर एंजाइम इज प्रेजेंट और एब्सेंट, एंजाइम चाहे प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर एंजाइम डाल दिया तो जो रिएक्शन पहले 80% कन्वर्ट होती थी प्रोडक्ट में तो 90% कन्वर्ट होना शुरू होगी। नहीं, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम तो वही होगा। और क्योंकि के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करते एंजाइम, इसका मतलब एंजाइम है वह फ्री एनर्जी को भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि के इक्विलिब्रियम पर ही तो फ्री एनर्जी चेंज डिपेंड करता है। डेल्टा जी जीरो डिपेंड्स अपॉन -2.303 RT log ऑफ के इक्विलिब्रियम। एंजाइम क्योंकि हम कह रहे हैं के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, और जो चीज के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगी इसका मतलब वह फ्री एनर्जी चेंज को भी अफेक्ट नहीं करेगी। जैसा के इक्विलिब्रियम अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का था वैसा ही के इक्विलिब्रियम कैटलाइज्ड रिएक्शन का भी होगा। मतलब एंजाइम फॉरवर्ड रेट को जितना बढ़ाता है उतना उतना बैकवर्ड रेट को भी बढ़ाता है ताकि इक्विलिब्रियम में चेंज ना आए, एंड दैट इज बिकॉज इक्विलिब्रियम इज व्हेन फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू बैकवर्ड रेट। कहने का मतलब अगर देयर इज सम रिएक्शन, लेट्स से ए is being converted to, let's say there is some reaction where an A is converted to B and delta G0 is given to you, suppose plus 4 kilocalorie per mole. What this means is reaction is not non-spontaneous forward direction, but it is spontaneous in a backward direction. If this values they are given, then you can simply say that the reaction in a forward direction is lesser favorable, there is more favorable reaction in a backward direction. And if you add an enzyme to this, what will happen? अगर यहां पर आप एंजाइम को ऐड कर लेते हो तो क्या होगा? क्या अब रिएक्शन फॉरवर्ड होनी शुरू हो जाएगी? तो हम कह रहे हैं नहीं, क्योंकि डेल्टा जी जीरो की वैल्यू वही रहेगी चाहे एंजाइम वहां पर है चाहे एंजाइम नहीं हो। डेल्टा जीरो में कोई चेंज ही नहीं आने वाला। रिएक्शन पहले भी बैकवर्ड फेवर्ड थी और एंजाइम अगर वहां पर प्रेजेंट है तो भी रिएक्शन बैकवर्ड ही फेवर्ड रहेगी। तो फिर एंजाइम ने क्या किया? तो
एंजाइम क्या करता है, जहां कहीं पर भी इक्विलिब्रियम आना है बैकवर्ड साइड में या फॉरवर्ड साइड में, उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने में जो बहुत ज्यादा समय लग सकता था, वो फॉरवर्ड रेट को भी बढ़ा देता है, बैकवर्ड रेट को भी बढ़ा देता है, ताकि जल्दी से इक्विलिब्रियम कंडीशन है वह अटेन कर ली जाए। एंजाइम्स दे वर्क एट सम ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड पीएच। अगर आप पीएच को वेरी करेंगे, टेम्परेचर को वेरी करेंगे, तो एंजाइम की एक्टिविटी पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम्स दे आर फंक्शनल व्हेन दे आर इन देयर 3D structure, that is most often a tertiary structure, and sometimes if enzyme is composed of multiple subunits, the final structure is quaternary structure. तो एंजाइम का टर्शरी या क्वार्टरी स्ट्रक्चर, इट इज स्टेबलाइज्ड मेनली बाय वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, and these weak non-covalent interactions they are affected by both pH as well as temperature. उससे अफेक्ट होते हैं, यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ेगा और एंजाइम के स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ेगा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल आल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड. Enzymes, they could be broadly classified into 6 major classes. इन सबको नोट डाउन करें. एंजाइम्स को 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है ऑन बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन मैकेनिज्म. दिस क्लासिफिकेशन हैज बीन गिवन बाय International Union of a Biochemistry and Molecular Biology, that is by IUMB. In class 1, we are having a oxidoreductase. Oxidoreductase are those enzymes which are involved in, we can say they are involved in the transfer of electron from one substrate to another. So you can say that these are the enzymes which are involved in such kind of reactions. Loss of electron is referred to as oxidation, and gain of electron is referred to as reduction. So there is, let's say, substrate 1 which is in reduced state, substrate B is in oxidized state. The electron transfer from substrate 1 to 2. As a result of this, now A moves to an oxidized state and B moves to a reduced state. There are various enzymes which fall to this category. Most common are dehydrogenase. इस क्लास के कई तरीके के एंजाइम्स इस क्लास में लाई करते हैं ऑक्सीडोरेडक्टेज में, जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल विच इज इन रिड्यूस्ड टू द अनदर सबस्ट्रेट जो कि ऑक्सीडाइज्ड है. लास्ट नतीजा ये होता है कि जो रिड्यूस्ड था वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो ऑक्सीडाइज था वह रिड्यूस हो जाएगा. यानी अगर पायरुवेट है वह लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, तो उस दौरान NADH NAD में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. देन सेकेंड कैटेगरी आर दोज विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर some functional group. They transfer some functional group from one substrate to another. वह एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट तक किसी ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं.
लेट्स से यहां पर येलो कलर से कोई ग्रुप बता रखा है जिसको हम बी नाम दे रहे हैं, जो ए के साथ एसोसिएटेड है. दिस इज अ सबस्ट्रेट 1, दिस इज सबस्ट्रेट 2, एंड दिस इज बीइंग ट्रांसफर्ड. दिस ग्रुप बी इज बीइंग ट्रांसफर्ड. सो अब बी सी के साथ आ गया. ए इज नाउ विदाउट दिस ग्रुप. डिपेंडिंग अपॉन कि ये एंजाइम्स किस ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं, उस बेसिस पर इनको अलग अलग नामों से जाना जा सकता. काइनेज आर दोज विच ट्रांसफर अ फॉस्फेट ग्रुप. जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं उन्हें काइनेज कहते हैं. जैसे प्रोटीन काइनेज, दे ट्रांसफर अ फॉस्फेट ग्रुप टू अ प्रोटीन. फॉस्फेट ग्रुप लेते कहां से हैं? तो मोस्ट ऑफन दे टेक अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी. मिथाइल ट्रांसफरेज, एज नेम सजेस्ट, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे. अमीनो ट्रांसफरेज, अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे. फॉस्फोट्रांसफरेज, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे. ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, शुगर को ट्रांसफर करने का काम करते हैं. तो फर्स्ट क्लास इज ऑक्सीडोरेडक्टेज, सेकेंड क्लास इज ट्रांसफरेज. इन क्लास थर्ड we keep hydrolase. Hydrolase are most often cleave covalent bond by utilization of water. कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, उसके लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड. दिस इज वाटर. जब हाइड्रोलेज यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, ए के साथ वाटर का H और बी के साथ वाटर का OH वाला पार्ट आ गया. हाइड्रोलेज जनरली इन रिएक्शंस के अंदर डेल्टा G0 इतनी नेगेटिव होती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है कि इनको रिवर्स डायरेक्शन में करना पॉसिबल नहीं होता बायोलॉजिकल सिस्टम. क्योंकि केमिकल सिस्टम में तो सारी रिएक्शन रिवर्सिबल है, बट बायोकेमिकल सिस्टम में मोस्ट ऑफन द रिएक्शंस कैरिड आउट बाय हाइड्रोलेज दे आर इरिवर्सिबल. मोस्ट ऑफन, ऑलवेज की हम बात नहीं कर रहे. अगर रिवर्सल रिएक्शन का कर रहा ये एंजाइम, क्योंकि एंजाइम ये तय नहीं करता रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या रिएक्शन बैकवर्ड होगी. रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी उसको डिसाइड करने वाला उसका काम डेल्टा G0 का है, या फिजियोलॉजिकल कंडीशन बात करें तो डेल्टा G के ऊपर डिपेंड करता है. पर जो भी रिएक्शन फॉरवर्ड है उस डायरेक्शन में रिएक्शन को और तेजी से कराने का काम एंजाइम कराता है. जनरली हम कह रहे हैं कि हाइड्रोलेज दे प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 इज लार्ज नेगेटिव. बट if they are operating in opposite direction, then instead of hydrolysis we will see that there is a condensation reaction, because when two molecules they will add, there would be an elimination of water molecule. If reaction is proceeding backward direction, bond would be formed and there would be an elimination of water molecule. We will name it as a condensation reaction. Then in class 4 we keep lyes. So they also break or form bonds without involvement of water. दैट इज रिएक्शन फॉरवर्ड होगी यानी बॉन्ड का लाइसिस होगी या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगी, वह डिपेंड करता है डेल्टा G0 के ऊपर या डेल्टा G के ऊपर. और जनरली यहां पर डेल्टा G0 की वैल्यू इतनी कम होती है कि ऐसी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल सकती है, यानी ये बॉन्ड को फॉर्म भी कर सकते हैं तो बॉन्ड को लाइज भी कर सकते हैं. अगर ये बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो उन्हें लाइज कहा जाएगा. सिंपली दे वुड बी रेफर्ड टू एज लाइज. और स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर वो बॉन्ड को फॉर्म करते हैं तो उन्हें सिंथेज कहा जाएगा. सो सिंथेज दे बिलोंग टू अ लाइज फैमिली. तो हाइड्रोलेज के अंदर खूब सारे एंजाइम, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोलेज के आप एग्जांपल लिख सकते हैं. हाइड्रोलेज के एग्जांपल हो गया प्रोटीज,
जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, अमाइलेज जो स्टार्च को ब्रेक करता है, लाइपेज जो लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, अमीडेज, ग्लाइकोसाइडेज एटसेट्रा, and even almost all acid hydrolase which is present in lysosome, there is most of digestive enzymes which are either involved in extracellular digestion or they are involved in intracellular digestion. They are belonging to class hydrolase. While in lys you often keep synthase or simply lys. लाइज के कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, सिट्रेट लाइज, आइसोसिट्रेट लाइज, फिनाइल एलेनिन अमोनिया लाइज एटसेट्रा। और सिंथेस के भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, वेयर देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर, लाइक मैलेट सिंथेस, सिट्रेट सिंथेस, these are example of synthase which belong to a lys family. Even one of the most abundant enzyme on the earth, that is rubisco, also belong to this family. Rubisco also belong to a lys family. Then next category is isomerase. Isomerase are those enzymes which transfer a position of some functional group विद इन ए सबस्टेट। यहां से किसी ग्रुप को उठाकर इधर की तरफ लेकर आ रहे हैं, या यहां से ग्रुप को इस साइड से वह इस साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं, या फंक्शनल ग्रुप को चेंज ही कर देते हैं, एल्डिहाइड के ऊपर कीटोन कन्वर्शन कर देते हैं। सो दे ट्रांसफर, more instead of transfer we should use the term, they either change position of group or change functional group itself. बट जब आइसोमरेज काम कर रहे होंगे तो न तो किसी तरीके का एलिमिनेशन होगा, न ही किसी तरीके का इंट्रोडक्शन होगा। जैसे यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया गया, ए के ऊपर येलो कलर का कोई ग्रुप यहां पर है, फंक्शनल ग्रुप यहां पर है, इसको यहां से ट्रांसफर कर यहां पर लगा दिया गया। नाउ दीज आइसोमरेजेस they can also be further subdivided depending upon the type of functions what they are carried out. अगर कोई सपोज यूडीपी ग्लूकोज को यूडीपी गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, यानी ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो एपिमरेज कहा जाएगा। सिंपली कोई फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर रहा है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज एल्डिहाइड, well fructose 6 phosphate is a ketonic sugar. We will use a simple word that is referred to as isomerase. Then racemase, the enzymes which convert a D form into an L form or L form into D form. Then mutase are those isomerase which change the position of functional group. For example, an enzyme which convert a glucose 6 phosphate into glucose 1 phosphate or glucose 1 phosphate into glucose 6 phosphate. Then इसी कैटेगरी में रखे जाते हैं cis trans isomerase. One of the example we have studied when we were studying a collagen, that is prolyl cis trans isomerase. They convert one geometrical isomer into another geometrical isomeric form. So first class is oxidase, second is transferase, third is hydrolase, fourth is lys, fifth is isomerase, and last class, sixth is ligase. In ligase, they form bond, but in
but by utilization of energy, either in form of ATP or GTP. So, for example, they are forming an bond between A and B, a product of A and B is formed, but for this they are often utilized ATP, GTP, CTP, UTP as an energy source. Lyase, they also form a bond, because lyase, they can also form a bond. You can see that A plus B, they can form a bond between A and B, means they are acting as a synthase. And even ligase, they can form a bond, but the difference is कि जब ligase काम करते हैं तो A प्लस B के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहां पर डेल्टा G वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कराने के लिए, स्पॉन्टेनियस कराने के लिए साथ में कोई सेकंड रिएक्शन कपल की जाती है जहां पर ATP ADP में कन्वर्ट हो या GTP GDP में कन्वर्ट हो, ताकि ओवरऑल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, फॉर्मेशन वाली डायरेक्शन में क्या कराया जा सके, नेगेटिव कराया जा सके. So simply the suffix for such enzyme could be ligase or synthetase. जैसे DNA ligase, it requires an ATP. और synthetase के भी कई सारे एग्जाम्पल, जैसे अमीनो एसाइल tRNA synthetase. Are you getting the point? Amino acyl tRNA synthetase, it needs an energy in form of ATP. Succinyl coenzyme A synthetase, you will find that it is utilizing energy either in ATP or GTP. Acyl coenzyme A synthetase also utilizes energy. Wherever there is a synthetase, there would be a formation of bond, but at the expense of energy. So there is a very small difference between synthase and a synthetase. Synthase, they belong to a lyase family, while synthetase, they belong to a ligase family. According to the IUMB, that is by International Union of Biochemistry and Molecular Biology, all enzymes, they have 4 numeric codes referred to as EC number or enzyme commission number, by which they are known. For example, the EC number of an enzyme alcohol dehydrogenase, enzyme alcohol dehydrogenase की हम बात करें, EC कमीशन के हिसाब से इसका नंबर है 1111. It is divided into 4 parts, जिसमें से हमें फर्स्ट पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट का पार्ट इट रिप्रेजेंट्स द क्लास. फर्स्ट मीन्स दिस बिलोंग टू अ क्लास oxidoreductase. That is, you can say that alcohol dehydrogenase belong to a category of oxidoreductase. The second digit represent about the subclass, because in oxidoreductase again there could be various subclasses like dehydrogenase and various reductase, oxygenase, etc. So dehydrogenase, oxidase, reductase, peroxidase, oxygenase, these all fall in a oxidoreductase category. Further, third digit represents a subclass, and fourth is often referred to as subclass. It could be further divided to this level. Similarly, if someone asks you, let's say EC number of a DNA ligase, suppose someone asks you that EC number of a DNA ligase का EC number 6511 है, तो फिर the EC number of DNA ligase is 6.5.1.1. तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है? तो मैं वापस कह रहा हूं, हमें सिर्फ फर्स्ट डिजिट के बारे में पता होना चाहिए. हम कहेंगे DNA ligase, हालांकि नाम से पता चल रहा है
it belong to class 6, that is ligase. यानी कोई आपसे पूछे रूबिस्को का ईसी नंबर किस डिजिट से स्टार्ट होगा, तो पहले आपको पता होना चाहिए रूबिस्को किस फैमिली से बिलोंग करता है. यू विल से दैट रूबिस्को बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ लाइस. तो फिर लाइस का क्लास नंबर क्या है, तो ऑक्सीडेटिव का 1, ट्रांसफरेज का 2, हाइड्रोलेज का 3, लाइस का 4. सो ईसी नंबर शुड स्टार्ट विथ द 4. नाउ कमिंग टू एन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. You can say that the active site of an enzyme is, to write down, the active site is a 3D cleft formed by amino acids that comes from different parts of an amino acid sequence. Second important point, note down these both points. Later on I am going to explain this. Second point is that active site takes a relatively small part of total volume of an enzyme. So, coming to the first point, what we mean by this, that the active site of an enzyme is a 3D cleft. So, it is somewhat like this, it is like a 3D cleft, somewhat like this, it is like a 3D cleft. It is like a 3D cleft. So, this could be the total enzyme, which may be very large, but a very cleft like structure. And this cleft is, means there would be various amino acids which are, whose R chain they are lining this cleft. ये R chain different amino acids की है जो कि यहाँ पर इंटरेक्शन करने के लिए अवेलेबल है. बट इट इज नॉट लाइक दैट कि अमीनो एसिड नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 मिलकर एक्टिव साइट बना रही है. नहीं, व्हाट यू फाइंड इज दैट दिस कुड बी, लेट्स से एन टर्मिनस ऑफ अ प्रोटीन, दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन जो इस तरीके से फोल्ड हो रही है, लेट्स से इस तरीके से वापस फोल्ड हो रही है, वापस इस तरीके से कुछ फोल्ड हो रही है, फिर वापस ये इस तरीके से कुछ आ रही है, फिर यहां से वापस आ रही है, एंड सो ऑन. सो नाउ आई एम ड्राइंग अ रैंडम डायग्राम. So most often the enzymes, they are functional in their 3D structure. Enzymes हैं वो functional 3D या tertiary structure में काम करते हैं. There would be some N terminus, there would be some C terminus, and now active site is lined by the R chain of various amino acid. But the R chain of various amino acids which are forming an active site or crevice, basically they are lying distant in their primary structure. यहाँ पर अब उन्होंने क्लेफ्ट बना दिया है, पर ये जो क्लेफ्ट बनाने वाले अमीनो एसिड, इट मे बी लाइक दैट वन ऑफ द अमीनो एसिड विच इज देयर इन एक्टिव साइट इज 23, another is of 57, another is of 98, another is 99, another could be 128, another could be 156 and so on. और जो टोटल प्रोटीन है, दिस इज अ टोटल प्रोटीन, तो टोटल प्रोटीन के कंपैरिजन में जो एक्टिव साइट है दैट इज टेकिंग ऑलमोस्ट a negligible part, even lesser than 10% is taken by an active site. Total protein is comparatively very large. A very small region is actually occupied by the active site. Most often, since the proteins, they are functional in their 3D structure. So,
first there would be some kind of primary structure, then there would be some kind of secondary structure, and then there would be a tertiary structure in which it is being shown. तो ये सारी चीजें हो सके, प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हो सके. तो मोस्ट ऑफन यू कैन से दैट मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स are of or are composed of over 100 amino acids. कल हम बात कर रहे थे प्रोटीन फोल्डिंग में, इवन RNase A which is a very small enzyme has 126 amino acids. So if there is some peptide of let's say 10 or 20 amino acid, it is not expected to form any kind of secondary structure, even secondary structure, tertiary structure की बात ही छोड़े. यानी इतना सा अगर अल्फा हेलिक्स एक बना लें, सिर्फ इतना सा अल्फा हेलिक्स जिसके अंदर 5 टर्न आ गए, और 5 टर्न भी हैं, और हमें पता है कि एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स आते हैं, तो 5 टर्न में भी लगभग 18 to 19 अमीनो एसिड आ गए. और सिर्फ इस तरीके से ये तो सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, ऐसे कई सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसमें होंगे, और ये कई सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर वापस फोल्ड होकर दे आर गोइंग टू फॉर्म अ 3D स्ट्रक्चर. सो 10, 20, 30 amino acid peptide is not expected to act as an enzyme because it will not able to form a 3D structure where there could be some crevice or groove where an substrate is going to bind, जहां पर substrate जाकर bind हो. एंड जो टोटल वॉल्यूम है एंजाइम का, उसमें एक्टिव साइट का हिस्सा बहुत कम है. वेरी स्मॉल फ्रैक्शन इज बेसिकली एन एक्टिव साइट. द सेम थिंग इज रिप्रेजेंटेड हियर डायग्रामेटिकली कि एक्टिव साइट जो क्रेवाइस है या ग्रूव है, वहां पर मल्टीपल चीजें आकर बाइंड होती है. तो येलो कलर से यहां पर एक्टिव साइट हमने ड्रॉ कर रखी है. एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है. एक्टिव साइट के साथ जैसे ही सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है, देयर इज अ लिटिल बिट चेंज इन द कन्फॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट. सो सबस्ट्रेट जैसे ही बाइंड होगा एंजाइम के अंदर, लेट्स से पहले एंजाइम के अंदर कुछ इस तरीके की शेप थी, अब एंजाइम के अंदर थोड़ी सी शेप के अंदर चेंज आ गया, अ लिटिल बिट चेंज. यहां से आप देख सकते हैं यहां का कर्वेचर और यहां का कर्वेचर में थोड़ा सा चेंज. We will study that hypothesis referred to as an induced fit hypothesis. सबस्ट्रेट जैसे ही एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करता है, सबस्ट्रेट एंजाइम में कन्फॉर्मेशंस को इंड्यूस करता है. और ये वन वे कन्फॉर्मेशंस नहीं है, ये 2 वे कन्फॉर्मेशनल चेंज है. एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम में कन्फॉर्म चेंज लेकर आता है और एंजाइम सबस्ट्रेट में कन्फॉर्म चेंज लेकर आता है, ताकि सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट किया जा सके, सबस्ट्रेट कुड बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. इट इज अ 2 वे प्रोसेस. एंजाइम में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और फिर प्रोडक्ट वहां से रिलीज होंगे. और एंजाइम की नजर से देखें तो इवन द प्रोडक्ट्स आर सबस्ट्रेट, क्योंकि रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, अगर रिएक्शन क्योंकि रिएक्शन A टू B फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या B टू A बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, दैट इज नॉट डिसाइड बाय एंजाइम. ये एंजाइम डिसाइड नहीं करता, ये कौन डिसाइड करता है, डेल्टा G. और हम जानते हैं कि डेल्टा G की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो सकती है, और नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव की जा सकती है बाय इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दैट वी हैव स्टडीड इन थर्मोडायनामिक्स. तो अगर A B में कन्वर्ट हो रहा है तो A को एंजाइम का सबस्ट्रेट कहेंगे, B को प्रोडक्ट. पर रिएक्शन का रिवर्स डायरेक्शन हो रही है तो B को सबस्ट्रेट कहना शुरू कर देंगे और A को प्रोडक्ट कहना शुरू कर देंगे. एक्टिव साइट जो एक क्रेवाइस है, क्लेफ्ट है, एक ग्रूव है, यहां पर एक या एक से ज्यादा सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो सकते हैं. इस क्रेवाइस या ग्रूव के अंदर इवन कोफैक्टर्स भी आकर बाइंड हो सकते हैं. तो ये वाली जो साइट यहां पर बता रखी है, दैट इज बेसिकली अ कोफैक्टर बाइंडिंग साइट. Enzyme may need more than one assistant. These are referred to as cofactors, and cofactor binding sites, they are also within an enzyme. And we will also see that within an active site, even some competitive inhibitors, they can also bind. And within an active site, there are 1, 2, 3 or few amino acids which
have a direct role in a catalysis, these are form a catalytic site. So एक्टिव साइट के अंदर ही हम कहेंगे कि यहां पर क्या क्या चीजें होती है। तो यहां पर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है, यहां पर within active site you will find a substrate binding site, here you will find a cofactor binding sites, cofactor binding site भी यहीं पर प्रेजेंट होती है। और इसी जगह पर even there is a you can say some catalytic साइट जो कि डायरेक्टली कैटलिसिस में पार्टिसिपेट करते। जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में इंटरैक्शंस होते हैं, सो लेट्स से दिस इज एन वी आर ड्राइंग एन स्ट्रक्चर ऑफ लेट्स से एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, लेट्स से दिस इज सम एंजाइम, so let's say this is an enzyme and this is a some kind of substrate, this is the substrate of this enzyme. Let's say this is the substrate. There could be various functional groups जो एंजाइम की एक्टिव साइट में जैसे जैसे विजिबल या एक्सेसिबल हो सकते हैं, एंड देयर कुड बी अ कॉम्पेटेबल फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सबस्ट्रेट बाय व्हिच द सबस्ट्रेट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंजाइम। अगर यहां पर कोई एक्सेप्टर ग्रुप है तो सामने की तरफ कोई डोनर होना चाहिए, यहां पर कोई नेगेटिव ग्रुप है तो सामने की तरफ पॉजिटिव ग्रुप होना चाहिए, यहां पर कोई डोनर है तो सामने की तरफ एक्सेप्टर होना। There are, when these enzyme and substrate obviously randomly they collide, and if they have a compatible molecular compatibility they will able to recognize each other, वह एक दूसरे को recognize करेंगे। Most often the substrate will induce a some kind of conformational change in enzyme, enzyme में कुछ न कुछ conformational change substrate जरूर लेकर आएगा। So let's say this is a little bit conformational change in the enzyme, and these changes are good because due to which now substrate could more efficiently bind to the enzyme. This is the substrate, and again as I have already said, it is not a one way change, change is two way. Enzyme is inducing a conformed change in a substrate and substrate is inducing a conformed change in the enzyme. And what are the interactions which are involved over here? यहाँ पर कौन से interactions हो रहे हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में अगर हम बात करें तो these are non-covalent interactions, and important non-covalent interactions which plays an important role are hydrogen bonding. The maximum strength is provided by hydrogen bonds. Important role is played by electrostatic interactions. Besides this, important role could also be played by hydrophobic interactions, and extra stability could be conferred by van der Waals interactions. They are weak but can provide an extra stability as we have studied in interactions. So all non-covalent type of interactions they are occurring between an enzyme and substrate, and most often as we have studied when we were studying the interactions that water interfere with these interactions. So what we find is most often water is excluded from
active site except if water is substitute, water is one of the substrate, तो बात अलग है. Otherwise most of time water is excluded. In other words, most of time here what you find is in this place you will have a non-polar environment which will facilitate mainly electrostatic interactions. Van der Waals interactions would be also better. Hydrogen bonding could be further enhanced, and water is excluded, and these non-polar groups of a substrate and enzyme, they could be kept together. So variety of non-covalent interactions, they are playing an important role between enzyme and substrate. Covalent bonds, covalent or any kind of covalent bonds are absent between enzyme and substrate. एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं होते, चाहे वो पेप्टाइड बॉन्ड हो या एस्टर बॉन्ड हो या किसी और तरीके का बॉन्ड हो, दैट विल नॉट अकर. सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर नोट डाउन नहीं किया तो इनको अभी भी नोट डाउन आप कर सकते हैं. सो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, that which interaction is not present between enzyme and substrate. So answer would be some kind of covalent interaction, because hydrogen bond, van der Waals interaction, hydrophobic, electrostatic, these are possible. So how enzyme specifically it interact with a substrate? Two different theories they have been put forward. One historical theory, that is referred to as Fisher's lock and key hypothesis. According to lock and key hypothesis, enzyme is like a lock and substrate is like a key. As like in a particular lock, a particular key get fit. Similarly, in a particular enzyme, a particular substrate is being recognized. There is a formation of enzyme substrate complex. That is, in lock and key hypothesis, more emphasis is given on major emphasis given on structural compatibility. That is, structure, if they are compatible, substrate will interact with an enzyme. But we know this is not the real story. That is, if let's say there is a positive group over here, some negative group over here, some donor group over here, and here also there is a positive group, there is some kind of donor group over here, there is some kind of, you can say, donor group over here, then these substrate, they are never going to interact, although their shape may be too fit, but they will repel each other. And there may be another substrate whose shape could be somewhat like this, but it is having a negative group over here, positive group over here, acceptor group over here, it will be recognized. So enzyme substrate interactions doesn't depend upon the structural compatibility. The enzyme substrate interactions, they mainly depend on multiple non-covalent interactions which provide a molecular compatibility. और इसको explain करने के लिए another hypothesis has been given, that is referred to as induced fit
hypothesis. Costland has proposed this hypothesis referred to as induced fit hypothesis. And according to this induced fit hypothesis, there must be a molecular compatibility between an enzyme and substrate. If there is some acceptor group over here, on opposite side there must be a donor group. If there is some donor group over here, a acceptor group should be on this side. If there is some negative group on this side, a plus group should be on this side. The structural non-compatibility could be there, because anyhow if there are some interactions, the substrate will induce a conformational change in an enzyme and vice versa, enzyme may induce a conformational change in a substrate. So substrate itself will induce a conformational change in an enzyme such that substrate can get fit into it, because we have already studied non-covalent interactions, they are efficient only when the distance between the bonded molecule or interacting molecule is very less. And we will later on study that not only the changes in enzyme, the changes is also in a substrate. Substrate attain a transition state, so that more chances that it would be converted into a product. So enzymes, substrate interactions, they are specific, and the reason for specificity is not structural compatibility. The reason for a stability is a molecular compatibility. That is, affinity of enzyme for its substrate depends upon number of non-covalent interactions. So 3 जगहों पर हो रहे हैं, 4 जगहों पर हो रहे हैं या 5 जगहों पर हो रहे हैं. That is, these non-covalent interactions, they are occurring at 3 places, 4 places or 5 places. If there are interactions, they are at multiple places, the affinity of an enzyme for that particular substrate, where the number of interaction is more, would be high. So these are two different theories which has been proposed to explain enzyme substrate interactions. And these enzyme substrate interactions, since they are depend upon non-covalent interactions, and we know that non-covalent interactions, they are not permanent, they can be easily formed or they can be easily broken. So enzyme substrate complex, if it has formed, it can convert back into an enzyme plus substrate, and if substrate is more, ES complex would be formed, and if substrate has been converted to more product, the concentration of substrate is lesser, then even substrate could dissociate back from an enzyme. Coming to the point that we know and we have studied in starting slide कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं. बट what is an activation energy? So we can define an activation energy as free energy of activation, जिसको इस तरीके से कई बार G स्टार्च या डबल डैगर से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. Free energy of activation is an energy required for substrate to attain transition state. ट्रांजिशन स्टेट को अटेन करने के लिए
जो एनर्जी लगती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है. नाउ a point may come into your mind, what we mean by transition state. So we can say that transition state is most energetic, or we can say active state during reaction. So सब ट्रांस स्टेट में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वो हाई एनर्जी स्टेट पर होता है. जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की चांसेस ज्यादा होते हैं. So let's say this is the substrate, let's say A, there is some substrate A and this is forming a product B, और इनके बीच में A और B के बीच में जो डिफरेंस होगा that would be referred to as overall energy released during the reaction, जिसे डेल्टा G कहा जाता है, क्योंकि डेल्टा G वैसे भी G ऑफ फाइनल स्टेट माइनस G ऑफ इनिशियल स्टेट डिपेंड के ऊपर डिपेंड करता है. और यहां पर फाइनल स्टेट की एनर्जी ऑब्वियसली कम है, इनिशियल स्टेट की एनर्जी ज्यादा है, तो चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा. और चेंज नेगेटिव आता है मींस रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए. पर डायरेक्ट ए बी में कन्वर्ट नहीं हो सकता. अगर ए को बी में कन्वर्ट होना है तो पहले ए को अपनी एक्टिव स्टेट में आना पड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट में आना पड़ेगा. दिस एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड so that substrate could move to a transition state, this energy which is required from outside, this energy यानी यहां से यहां तक का जो डिफरेंस, this is referred to as activation energy. And once you get and provide an activation energy, then this is converted readily convert to a product. वापस जितनी एक्टिवेशन एनर्जी हमने दी थी उतनी एक्टिवेशन एनर्जी वापस रिलीज हो गई और उससे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई. आपने 4 किलो कैलोरी दी तो 4 तो मिली और उसके साथ 2 और एक्स्ट्रा मिली, नेट चेंज -2 हो गया. आपने 4 का इन्वेस्टमेंट किया, वापस यहां से यहां तक कितनी एनर्जी निकली आपके पास, 6 का डिडक्शन हो गया, तो नेट चेंज क्या हुआ, 4 - 6 अगर करेंगे तो भी -2 का होगा. बट रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में आए, इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचे. ट्रांस स्टेट में जाने के लिए अगर ज्यादा एनर्जी थी तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि बहुत कम सबस्ट्रेट ट्रांस स्टेट को अटेन कर पाएंगे. रिएक्शन को तेज करना है तो बाहर से एनर्जी ज्यादा दो ताकि सबस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा ट्रांस स्टेट को अटेन करे. या सेकंड तरीका ये हो सकता है कि क्यों ना इस बैरियर को ही कम कर दिया जाए जो ट्रांस स्टेट को अटेन करने के लिए, और एंजाइम ये सेकंड काम करता है, उस बैरियर को ही कम कर देता है. अभी भी आपको हो सकता है ट्रांस स्टेट में सबस्ट्रेट को ट्रांस स्टेट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए जब वो एंजाइम के साथ बाउंड है, लेकिन एंजाइम के साथ जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली बहुत कम. इतनी एनर्जी बाहर से मिल जाए इसकी संभावना है ऑब्वियसली कंडीशन 1, जब एंजाइम नहीं था उससे तो बहुत ज्यादा ही है. इसलिए अब ज्यादा जल्दी से रिएक्शन को कंप्लीट कराया जा सकता है. सो दैट्स व्हाई वी से दैट व्हाट एंजाइम डू इज दे लोवर्स एक्टिवेशन energy, and activation energy is an energy which is required to attain the transition state. हम ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम्स रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करते हैं. और वैसे भी फ्री एनर्जी क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है वो पाथ टेकन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए कोई भी पाथ लो डेल्टा जी तो वही रहेगी. लेकिन पाथ कौन सा लिया जाता है उसके ऊपर, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी ये डिपेंड नहीं करती, पर रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी ये जरूर डिपेंड करती है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन अ पाथ टेकन. सपोज ये पर्सन है जो सबस्ट्रेट को इस रास्ते से यहां तक पहुंचाता है पहले और फिर उसको प्रोडक्ट में यानी दूसरी तरफ
कन्वर्ट करता है। पर सबस्ट्रेट को इधर की तरफ लाने के लिए ओवरऑल नेट प्रोसेस तो इधर से इधर की तरफ जाना फेवरेबल है, क्योंकि सेकंड टाइप के अंदर स्लोप ज्यादा है, सेकंड साइड में वो लोअर हाइट पर है। लेकिन प्रोसेस फेवरेबल होने के बावजूद भी कम से कम इस पर्सन को, सबस्ट्रेट को इस पीक पर लेकर जाना पड़ेगा और फिर यहां से वो रोल करे तो तेजी से मूव करेगा और तेजी से मूव करेगा। जितनी एनर्जी यहां पर उसने लगाई उससे ज्यादा एनर्जी इधर की तरफ से रिलीज हो जाएगी जब ये इस तरीके से रोल करता हुआ ग्राउंड की तरफ आ रहा है। एनर्जी जो इस लेवल तक पहुंचाने के लिए चाहिए उसे हमने कहा एक्टिवेशन एनर्जी। तो लेट्स से देयर इज अ लैक्टोज, और लैक्टोज को इस लेवल पर लाने का मतलब इसको थोड़ा और बेंड करके स्ट्रक्चर को बता देंगे। इस तरीके के स्ट्रक्चर में लाने के लिए हम कहेंगे अब सबस्ट्रेट ट्रांसस्टेट में, इस स्टेट में लाने का मतलब अब रेडिली इट वुड बी कन्वर्ट टू अ प्रोडक्ट। अब उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता। एंजाइम क्या कर रहा है? अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो उसने क्या किया कि इस हाइट को ही कम कर दिया। अब देखें, अभी भी हो सकता है आपको इस बॉल को यहां तक लेकर जाना पड़ रहा है, पर अब जो हाइट है वो कंपेरेटिवली बहुत कम। मोर एंड मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स दे कैन मूव टू दिस पॉइंट। यहां पर ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पहुंचेंगे, और ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पहुंचेंगे मतलब अभी भी वो किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं? प्रोडक्ट। So when an enzyme binds to a substrate, comparatively lesser activation energy is required, and if activation energy requirement is lesser, more chances that substrate would be converted to a product. So basically, again, what we are saying is that 2.2 बात हमें तक पढ़ ली है कि enzymes they are lowers activation energy, और second बात हम कह रहे हैं कि they provide alternative pathway for reaction completion. Then this could be explained by one more, this cartoon diagram, that what actually enzymes do. We can say that enzymes, they stabilize the substrate in a transition state. Let's say that there is a substrate, a boy with a sweater. एक बॉय है जिसने स्वेटर या मान लें टी शर्ट पहन रखा है। हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है, अ बॉय without a t-shirt, means you are having a boy on this side and another t-shirt over here. So these are, let's say, product. These are the products what we want to make. This is product 1 and this is product 2. या इन प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 से सबस्ट्रेट बनाना। अब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या रिवर्स होगी वह एंजाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो थर्मोडायनामिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट फॉर दिस अ सबस्ट्रेट शुड मूव टू द ट्रांजिट। इस तरीके के ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ेगा, और ट्रांजिट स्टेट में जाएगा तो ही उसका स्वेटर है वह उतर पाएगा। अगर कोई एंजाइम नहीं है, मान लें उस बच्चे की सिर्फ मदर घर पर है, स्कूल से बच्चा आया, स्कूल यूनिफॉर्म टी शर्ट उतारना है, तो मदर को हो सकता है बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़े कि जो बॉय है वह इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट में आ जाए ताकि स्वेटर को पुल कर कर निकाला जा सके, टी शर्ट को पुल करके निकाला जा सके। फाइनली अ बॉय वुड बी विदाउट अ टी शर्ट। बट लेट्स से फादर इज एट होम और वह इस तरीके से सबस्ट्रेट को ट्रांसस्टेट में स्टेबलाइज करके रख देता है, पकड़ के रख देता है, तो अब मदर आसानी से टी शर्ट को पुल आउट कर पाएगी। सो दैट इज व्हाट एंजाइम डू। एंजाइम क्या कर रहा है? एंजाइम इज, ये सबस्ट्रेट की ग्राउंड स्टेट है, पर एंजाइम सबस्ट्रेट को किस स्टेट में स्टेबलाइज करके रखता है? ट्रांसस्टेट में। और क्योंकि
activation energy is an energy which is required to attain an trans state, but if enzyme is there, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्शंस में एनर्जी यानी बाइंडिंग एनर्जी होती है, वहां से अगर एनर्जी मिल गई तो अब बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है. If substrate is already in a trans state, then there is a need of energy or activation energy from outside is very less. That is, more and more substrate could be converted to a product. So what enzymes they are doing is they are decreasing the activation energy. And how they are decreasing the activation energy? We say that by stabilization of transition state. And how this, what happens due to an stabilization of transition state? If there is a trans state stabilization of substrate, the benefit is now there is a lower need of activation energy. अब क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कुड बी डिस्ट्रॉयड, अगर एक्टिवेशन एनर्जी हमें बाहर से नहीं चाहिए तो फिर एनर्जी कहां से मिली? कहीं ना कहीं से तो एनर्जी मिलेगी. सो वी कैन से दैट एनर्जी is provided due to multiple non-covalent interactions between enzyme and substrate. This energy which is compensating the activation energy is referred to as बाइंडिंग एनर्जी. इसे बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है. देन so you can note down this point that binding energy which is due to a multiple weak interaction with a substrate decreases activation energy required to achieve a transition state. एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम क्यों है? क्योंकि एनर्जी हमें कहां से मिल रही है? तो एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम अ बाइंडिंग एनर्जी. Then moving further, coming to the important factors which affects the enzyme catalyzed reactions or the velocity of reactions. First is the substrate concentration. As we increase the substrate concentration, we are assuming that the concentration of enzyme is fixed, pH, temperature are constant, उसको हम वेरी नहीं कर रहे हैं. Only variable parameter, only variable parameter is enzyme is the substrate concentration. जिस किसी पैरामीटर को आप वेरी करते हैं उसे वेरिएबल पैरामीटर है, उसे एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है किसी भी ग्राफ में. और जिस चीज जो पैरामीटर आप मेजर करना चाहते हैं, वह जिसको आप मेजर करना चाहते हैं वेरिएशन के साथ, उसको हमेशा वाई एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है. तो वेरी कर रहे हैं हम, ये नहीं कर रहे हैं वेलोसिटी वेरी कर रहे हैं जिससे सबस्ट्रेट पर फर्क पड़ रहा है. वी आर वेरिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन and we are measuring the change in velocity. So only variable parameter is substrate concentration, and what we are recording? So we are recording change in reaction
velocity. That is, as we increase the substrate concentration, what happens to a reaction velocity? So what you find is that initially you got a almost straight line. Later on this straight line उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं होती और एक स्टेज ऐसी भी आती है जब ये ऑलमोस्ट लाइन फ्लैट हो जाती है. दिस velocity, maximum velocity which is attained is referred to as Vmax. जिसके बाद और सबस्टेट कंस्ट्रेंट बढ़ाने पर वेलोसिटी पर कोई फायदा नहीं होता. सो बेसिकली Vmax is maximum velocity possible. जब सबस्टेट कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा आप बढ़ा रहे हैं फिर भी उससे ज्यादा वेलोसिटी क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी सबस्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि सबस्टेट कंसंट्रेशन तो आप यहां पर और भी बढ़ाते जा रहे हैं, यहां पर और भी बढ़ाते जा रहे हैं. सबस्टेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वेलोसिटी Vmax पर कोई चेंज नहीं आता. तो Vmax डजंट डिपेंड. हाँ, that is normal velocity, it depends on substrate concentration. नॉर्मल V सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है पर Vmax सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी? दैट बेसिकली Vmax इट डिपेंड्स ऑन एंजाइम कंसंट्रेशन. आपने एक फिक्स्ड एंजाइम की कंसंट्रेशन ली है. जब तक एंजाइम्स रिएक्शन में फ्री है, सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाओ, फायदा मिलता जाएगा. एक बार टोटल एंजाइम या 100% एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में लगातार कन्वर्ट करते जा रहे हैं, कन्वर्ट करते जा रहे हैं, और उसके बाद भी आप सबस्ट्रेट को बढ़ाओ तो फिर अब रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा. यानी वी कैन से दैट Vmax इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ET. इट डिपेंड्स अपॉन the total enzyme concentration. अगर आप टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हो तो एंजाइम को बढ़ाओ, क्योंकि सबस्ट्रेट को बढ़ा के तो आपने देख लिया सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वेलोसिटी में फर्क आ रहा है पर मैक्सिमल वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा है. और जैसा जब हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रहे थे कि सबस्ट्रेट के साथ साथ अगर हम वेलोसिटी V0 को ऑब्जर्व करें तो इनिशियली स्ट्रेट लाइन में चेंज देखने को मिलता है. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑबे होती है. कब? जब देयर इज अ लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. जो ऑब्जर्व वेलोसिटी ऑफ V0 धीरे 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 बढ़ती जाती है. मतलब जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपके मार्क्स से बढ़ते जाएंगे और फाइनली उस स्टेट पर पहुंच जाएंगे जिस दैट इज रेफर्ड टू एज Vmax. अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपके 100 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं. उसके बाद भी आप अपने स्टडी हार्स को बढ़ा दो, 80 से 90 हार्स कर दो, 90 से 100 हार्स कर लो, तो अब आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यू हैव अचीव्ड अ Vmax. और मार्क्स बढ़ाना है तो अब एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन ही बढ़ाने पड़ेंगे. एग्जामिनेशन पेपर शुड बी ऑफ मोर मार्क्स. So similarly here we say that as your marks keep on gradually increasing, as you keep on increasing the substrate means study hard until you achieve a Vmax. बहुत ज्यादा आप स्टडीज करेंगे तब Vmax अचीव कर सकते हैं, और Vmax से ज्यादा अचीव या मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा आप मार्क्स अचीव नहीं कर पाएंगे. Initially there is straight line relationship, and then when the substrate concentration is very high, whenever there is a very high substrate concentration, that is whether the substrate concentration is 70 or it is 80 or 90 or 100, the observed velocity is constant. The V0 becomes equal to Vmax, और अगर V0 Vmax के बराबर हो गया तो अब और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. This is called as zero order kinetics. In between जो काइनेटिक्स है वह फर्स्ट ऑर्डर से तो कम है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की तरह होता तो इसी
तरह से स्ट्रेट लाइन में बढ़ता, उससे थोड़ा कम है, पर जीरो ऑर्डर भी नहीं है। जीरो ऑर्डर होता तो फ्लैट होता, जीरो ऑर्डर से ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑर्डर से कम, जीरो ऑर्डर से ज्यादा, दिस कुड बी रेफर्ड टू एज मिक्स्ड ऑर्डर. So at low, very low substrate concentration, you are getting first order. At intermediate substrate concentration, you are getting a mixed order, and very high substrate concentration, you are getting a zero order reaction. अगर ये Vmax है और Vmax को अचीव करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए. हाफ Vmax को अचीव करने के लिए जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए उसे आगे चलकर हम Km कहेंगे. सो यहां से हम एक टर्म और भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज Km. तो Km इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू अचीव half of Vmax. That is, in other words, you want that V0 should be half of Vmax. उसके लिए आपको कितनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए. एज एन एनालॉजी, टू अचीव 100% मार्क्स in an exam is bit difficult because you have to study very large number of hours. It might be a case कि out of 24 hours आपको 22 hours पढ़ना पड़े, maybe. So instead of looking for 100% marks, we can focus on 50% marks, because achieving 50% marks in any of examination, whether it is your BSc examination or MSc examination, is relatively easier. आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, पर फिर भी कितना कम या कितना पढ़ना पड़ेगा. तो 50% मार्क्स लाने के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, यानी कितनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लगानी पड़ेगी, उसे हम क्या कहते हैं, Km. तो Km is a substrate concentration required to achieve half of Vmax. जो भी मैक्सिमम मार्क्स है उसके 50% लाने के लिए आपको कितना चाहिए. देन मूविंग फर्दर, अनदर फैक्टर जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करता है, that is temperature. In general, जैसे से आप इनिशियली टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएं, वैसे वैसे वेलोसिटी एज एक्सपेक्टेड बढ़ती जाती. रीजन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है उसको टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है यू आर प्रोवाइडिंग अ थर्मल एनर्जी, जिसके सबस्ट्रेट है वो और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेवल पर पहुंचता जा रहा है. इट इज मूविंग नियर द ट्रांजिशन स्टेट. ज्यादा चांसेस है इन लो टेम्परेचर रिएक्शन वुड बी स्लो, टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन फास्ट होती जाएगी. पर देयर वुड बी सम ऑप्टिमम टेम्परेचर. अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, लेट्स से दिस कुड बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड. उससे और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर फिर तो सबस्ट्रेट और ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट के नजदीक पहुंच रहा है, इट इज मोर नियरर द ट्रांजिशन स्टेट. तो फिर रिएक्शन डिक्लाइन क्यों हो रही है? क्योंकि हायर टेम्परेचर पर सबस्ट्रेट तो हाई एनर्जी लेवल पर है, पर उसकी मदद करने वाला एंजाइम डीनेचुरेट हो गया है. क्योंकि एंजाइम्स, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, वर्क when it is in its final tertiary structure, 3D structure, and this 3D tertiary structure, it is stabilized by variety of non-covalent interaction. और अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर होगा, और एंजाइम डीनेचर होगा तो फिर वेलोसिटी वापस कम हो जाएगी. क्योंकि ऑल्दो सबस्ट्रेट हायर एनर्जी लेवल पर है, पर वापस जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू. जैसे जैसे टेम्परेचर आप 40 करें, 50 करें, 60 करें, वैसे ज्यादातर एंजाइम्स, पहले 10% एंजाइम डीनेचर हुए, फिर 50% एंजाइम डीनेचर होंगे, 90% एंजाइम डीनेचुरेशन होते जाएंगे. और जैसे जैसे एंजाइम्स डीनेचर होते जाएंगे, पार्टिसिपेटिंग एंजाइम की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन वापस डिक्लाइन होना.
अब ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या ऑप्टिमम टेम्परेचर है वह 72 डिग्री होगा या 70 डिग्री होगा, वह यानी कई सारे थर्मोस्टेबल भी होते हैं एंजाइम्स, जो हो सकता है 70 डिग्री तक भी एफिशिएंटली काम कर पाए। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका टेम्परेचर ऑप्टिमा काम करने वाला, इवन इट कुड बी एज लो एज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे और हाई करने पर, यानी ऐसे एंजाइम्स को हम थर्मोलेबल भी कह सकते हैं, हाई टेम्परेचर काम नहीं कर पाते। कब तक प्रोटीन को या एंजाइम को बेनिफिट होता जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने का, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर है उसको स्टेबलाइज करने वाले कितने नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस हैं। अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंटरेक्शंस प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ, फायदा मिलता रहेगा। थर्मोस्टेबल प्रोटीन्स के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, वो भी अट्रैक्टिव तरीके के होते हैं, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, फायदा मिलता जाएगा। लेकिन कभी ना कभी है तो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन ही, there would be some temperature after which even a thermostable protein they will also start denaturating. So another factor जो एंजाइम की रेट को इन्फ्लुएंस या अफेक्ट कर रहा है, that is temperature. Then moving to another factor जो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन को अफेक्ट या इन्फ्लुएंस करता है, that is pH. You know that most of the enzymes they work at a optimum pH of 7. Example is salivary amylase. But there may be some enzymes whose optima of pH could be around 4.5. For example, most of the enzymes which are working in lysosome referred to as acid hydrolase. And for some other enzymes like pepsin, the pH optima could be around 1.5. उसके comparison, there are some enzymes which can work optimally at around pH 9.5. For example, alkaline phosphatase. Majority of enzymes they are working around 7. Now, why the enzymes they work at their optimum pH? Optimum pH would be 4.5, 1.5, 7 or 9.5. It is if you are moving pH above that or lower that, the activity is influenced. So optimum pH is pH where enzyme is able to maintain its active conformation. Active conformation doesn't mean stable conformation. Active conformation means where it is most efficient in stabilizing the substrate in its transition state. If pH is increased or decreased from optimal pH, charge on protein या charge on enzyme changes, which will induce negative conformational change, and hence enzyme activity declines. So, as we have already seen, when we were investigating the proteins, pH को वेरी करने पर लोअर pH पर पॉजिटिव चार्ज लाया जा सकता है, हायर pH पर नेगेटिव चार्ज लाया जा सकता है। pH को वेरी करने पर चार्ज में फर्क आएगा, और चार्ज में फर्क आया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस इन्फ्लुएंस होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस इन्फ्लुएंस हुए तो कंफॉर्मेशन चेंज होगी, और क्योंकि वो सबसे पहले अपने ऑप्टिमम pH पर एक्टिव कंफॉर्मेशन में था, तो अब pH को बदलने पर
It will move from its active conformation to a inactive conformation. So various enzymes, they have their optimal pH around 7. Most of the cytosolic enzymes, they are having a optimal pH around 7 because they have adapted and evolved according to that pH only. Well, एसिड हाइड्रोलेज ज्यादातर एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं pH 4.5 के आसपास. एंजाइम जो स्टोमक में काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन, इट हैज टू वर्क एट एसिडिक pH, वो pH 7 पर काम करेगा तो कोई ऐसे एंजाइम को स्टोमक में रखने का फायदा भी नहीं होगा क्योंकि उस तरीके का एंजाइम स्टोमक में काम ही नहीं कर पाएगा. तो ज्यादातर एंजाइम्स जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में काम करते हैं, दे वर्क वेल एफिशिएंटली अराउंड pH 8 और 8.5. अल्काइन फॉस्फेटेज इज वर्किंग एफिशिएंटली एट pH अराउंड 9. So this is how a bell-shaped curve is observed. That is, you are getting most efficient enzyme activity at some optimum pH, and if you go beyond, below or higher than that, there is change in the activity of an enzyme. Now, coming to a very important topic within an enzyme, that what are cofactors. So enzymes, they basically stabilize the substrate in transition state, thus they lowers activation energy. To do so, some other factors may assist. एंजाइम का काम सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबलाइज करना है. एंजाइम के इस काम में कुछ और फैक्टर्स हेल्प कर सकते हैं. सच फैक्टर्स और असिस्टेंट्स आर रेफर्ड टू एज कोफैक्टर्स. सो कोफैक्टर्स आर फैक्टर्स विच असिस्ट एंजाइम इन इट्स फंक्शनिंग, उन्हें कोफैक्टर कहा गया. द एंजाइम विच रिक्वायर अ कोफैक्टर, दे विल नॉट एबल टू वर्क इन एब्सेंस ऑफ दैट. जिन एंजाइम्स को कोफैक्टर की आवश्यकता होती है वह बिना कोफैक्टर के काम नहीं कर सकते. Cofactors could be divided into two main categories depending upon their chemical nature. Cofactor का केमिकल नेचर कैसा है उस बेसिस पर हम उनको दो टाइप में बांट सकते हैं. These could be either inorganic metal or these could be organic. Means these could be inorganic or these could be organic. Inorganic में mainly these are some kind of metals. And these could be organic. Most of these organic cofactors, we will see that they are derived from vitamins. क्योंकि प्रोटीन भी ऑर्गेनिक है और अगर कोफैक्टर भी ऑर्गेनिक हो तो वह एंजाइम जैसा हो गया. इसलिए इन ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के लिए वी ऑफन यूज अ टर्म कोएंजाइम. Cofactors could be inorganic, most often metal ions, or a cofactors could be like an enzyme, that is they could also be in organic nature. Then such cofactors would be referred to as coenzymes. Coenzymes एंजाइम के साथ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से या लूजली बाइंड रह सकते हैं, वीक बाइंडिंग शो कर सकते हैं. जब सबस्ट्रेट इंटरेक्ट करता है वापस हट जाता है, ऐसे कोएंजाइम भी एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड हो सकते हैं और वापस वहां से डिसोशिएट हो सकते हैं. तो कोफैक्टर्स दे कैन आल्सो लूजली बाइंड टू द एंजाइम और दे कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द एंजाइम. These organic coenzymes, they may get covalently bound to the active site of enzymes. Permanent active site का हिस्सा बन सकते हैं, permanently वहां पर आकर बाइंड हो गए. Now they are not living in active site, they are always permanent resident of the active site. Such coenzymes,
जो परमानेंटली एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड रहते हैं, वह एक्टिव साइट को लीव नहीं करते, उनके लिए, यानी जो स्ट्रांगली बाउंड है, फॉर देम वी यूज अ टर्म प्रोस्थेटिक ग्रुप, उनके लिए हम प्रोस्थेटिक ग्रुप टर्म का इस्तेमाल करते हैं. सो नाउ मूविंग टू द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट cofactors, but prior to this, one thing what you can note down is that when an enzyme is with its cofactor, it is referred to as holoenzyme. Enzyme in absence of its cofactor उसके साथ bound नहीं है, then it will be referred to as apoenzyme. Within a active site, there is a cofactor binding site where cofactor can bind. So apoenzyme, and on apoenzyme there is a binding of cofactor, there is a formation of holoenzyme. Both these cofactor and this proteinous enzyme part, they help in converting the substrate into transit state so that the substrate could be converted to a product. You can see that enzyme also interacting with the substrate and this cofactor is also interacting with the substrate. They both play an important role in stabilizing a substrate in a transition state. So, coming to some of the important inorganic cofactors, इन सबको नोट डाउन करें. Some of the important inorganic cofactors include, first, zinc. So table form करें. Zinc is required for activity of one fastest known enzyme, carbonic anhydrase. Zinc is also needed by another enzyme, carboxy peptidase. Another enzyme जिसको zinc की requirement होती है, that is alcohol dehydratase. There are various other enzymes, but these are three important enzymes. मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट, स्पेशली वह सारे एंजाइम्स जिनको किसी न किसी न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, दे यूजेस मैग्नीशियम आयन लाइक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज, हेक्सोकाइनेज, टोपोइसोमरेज, डीएनएज, आरएनएज एटसेट्रा. Nickel is, again it is very important, nickel is required as a cofactor for enzyme urease. After nickel, molybdenum. Molybdenum is required by as a cofactor for nitrate reductase of plant dinitrogenase or simply nitrogenase of bacteria. Then another metal ion is selenium. Selenium is required. Selenium is basically a part of one important 21st strand amino acid referred to as selenocysteine, and this selenocysteine is required for enzyme glutathione peroxidase. All we have already seen it. Selenocysteine is present in glutathione peroxidase and form it dehydrogenase. Manganese is required by the enzyme SOD, that is super oxide dismutase. Manganese is also required by water splitting enzyme which is present with a photosystem second. प्लांट फिजियोलॉजी में आप डिस्कस करेंगे कि फोटोसिस्टम सेकंड के साथ वाटर स्प्रेडिंग एंजाइम है और वाटर स्प्रेडिंग एंजाइम को काम करने के लिए मैग्नीज चाहिए. मैग्नीज इज ऑल्सो नीडेड बाय एन एंजाइम रेफर्ड टू एज आर्जिनेज, जो आर्जिनिन को ऑर्निथीन और यूरिया में कन्वर्ट करता है.
यूरिया साइकिल में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्जिनेज को भी अपना काम करने के लिए मैंगनीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अनदर metal, potassium ion is required for the activity of propionyl coenzyme A carboxylase. Various enzymes, they need a copper as a cofactor. The important one is tyrosinase, uric acid oxidase, ascorbic acid oxidase, and cytochrome oxidase, and within a cytochrome oxidase, more accurately cytochrome A3, require a copper. There are various enzymes which need iron as a cofactor. Most of the cytochromes which are involved in electron transport chain, whether it is cytochrome B, cytochrome C1, cytochrome A, cytochrome A3, and so on, they need the iron. Besides cytochrome, catalase, which act on H2O2, also need an iron. Aconitase, an enzyme of TCA cycle, also need an enzyme. Hydrogenase, which is present in some nitrogen fixing bacteria, also need an iron. Dinitrogenase or simply nitrogenase also need an iron. So most of these enzymes which needs some kind of metal ion are referred to as metalloproteins, and most often you need see that divalent cations, they are needed, like zinc, magnesium, manganese, molybdenum, copper, ferrous, etc. No doubt at some places you find you need a potassium ion as well. So this is one of the reason why we need a mineral water, why we do not depend on distilled water, because small proportion of minerals is daily lost from our body in form of excretion with urine, excretory material, as well as by sweating. We can lose some amount of these minerals. That much amount of mineral which we lose daily must be taken from a diet, either through a food source or with a water. That is, the output should be balanced by an input. And since most of these metal ions, they are being used as a cofactor, that is, they are simply participating in reaction. We do not need them in high amount, क्योंकि ये participate करते हैं, रिएक्शन कंप्लीट हुई वापस रिकवर हो जाता है, इसलिए में बहुत ज्यादा अमाउंट में जिंक खाने की जरूरत नहीं है, कॉपर खाने की जरूरत नहीं है. We need it in trace amount, only that much amount which is required for the metabolic activities of various important enzymes. So these are some of the important metal ions, or we can say inorganic cofactors. Coming to the list of organic cofactors. Most of the organic cofactors, they are derived from some kind of water soluble vitamins. कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहें तो this include thiamine pyrophosphate, which is derived from vitamin B1. This thiamine pyrophosphate, it is required for the activity of transketolase in HMP pathway, and pyruvate dehydrogenase in a TCA cycle. Then B2 is flavin, and from flavin you are getting at least two different coenzymes referred to as flavin mononucleotide and flavin adenine dinucleotide, that is FMN and FAD. Flavin
adenine dinucleotide FAD is required for the activity of an enzyme succinate dehydrogenase. One of the enzymes is succinate dehydrogenase, and the FMN is required by the activity for the activity of an enzyme NADH dehydrogenase. You will find that succinate dehydrogenase, it is a part of complex second of electron transport chain, while NADH dehydrogenase, it is working in a complex 1 of electron transport chain. Similarly, vitamin B component niacin gives rise to a nicotinamide, and from niacin or nicotinamide you can obtain a coenzymes referred to as NAD and NADP. NAD is required for the activity of various enzymes because it is one of the most commonly utilized coenzyme NAD. One of the enzymes where there is a requirement of NAD, you can note down, is lactate dehydrogenase. Vitamin B6 is pyridoxal, and from pyridoxal you get a pyridoxal phosphate, and pyridoxal phosphate is required for the activity of glycogen phosphorylase, as well as it is also needed for various enzymes involved in amino acid metabolism, and one such is aminotransferase. Coenzyme A, which is mainly involved in acyl chain transfer. So you can, because most of the coenzymes, they are also involved in transfer of some specific group. For example, FAD, FMN या NAD, they are mainly involved in इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऐसे एंजाइम्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व है, वहां पर ये काम में आते. तो जो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट है वो बेसिकली मेनली pyridoxal phosphate, it is mainly involved in amino transfer reactions. amino transfer में involved है. तो coenzyme A, which is derived from pantothenic acid, a vitamin B complex, coenzyme A is mainly involved in acyl transfer reactions. जहां कहीं पर भी acyl transfer होता है. Biotin is required for the activity of carboxylation reaction. Biotin जहां कहीं पर भी 1 carbon addition जहां कहीं पर भी करना हो, and that too by carboxylation reaction, उन जगहों पर बायोटीन की रिक्वायरमेंट होती. Deoxyadenosine cobalamine is required for the activity of methyl malonyl mutase. Tetrahydrofolate is needed for the thymidylate synthesis, and these are also involved in 1 carbon transfer reaction. 1 carbon transfer either in form of formyl group form या मिथाइल, यानी एक कार्बन ट्रांसफर करना हो, बढ़ाना हो, तो वहां पर टेट्राहाइड्रोफोलेट काम करता है. These most of them, they are vitamin B component. Ascorbic acid is vitamin C, and we have already seen the role of ascorbic acid in collagen, that it is needed for the activity of prolyl hydroxylase. Most often the vitamins, so most of coenzymes are derived from water soluble vitamins. ज्यादातर water soluble vitamins से obtain होते हैं, and that's why water soluble vitamins is important, because first, since being water soluble, body में store नहीं किए जा सकते. दूसरा, वह कई सारे एंजाइम्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है. ऐसे कई सारे एंजाइम्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, उन्हें हमें को एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है. इसलिए these vitamins, they have to be taken daily, especially water soluble vitamins, they have to be taken daily in diet. But in some cases, menaquinone, which is a lipid soluble vitamin, could also act as a coenzyme. And menaquinone, it is involved in gamma carboxylation reaction,
which is involved in blood clotting cascade. At some places, some amino acid derivatives like S-adenosylmethionine, glutathione, etc. They could amino acid derivative, like since a protein is composed of amino acid, sometime even the coenzymes could also be a proteinaceous in nature. For example, S-adenosylmethionine derived from a methionine is needed for the activity of enzyme referred to as methyltransferase, let's say DNA methyltransferase. तो ग्लूटाथायोन जो एक ट्राइपेप्टाइड है, ECG हमने डिस्कस किया था, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन, इट इज नीडेड एज अ कोएंजाइम फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज। और एक और प्रोटीनेशियस आप चाहें तो लिख सकते हैं, वन मोर इज थायोरेडॉक्सिन। थायोरेडॉक्सिन is also proteinaceous in nature and it is needed for the activity of ribonucleotide reductase। ये ribonucleotide reductase को चाहिए। So कुछ जगहों पर प्रोटीन भी अमीनो एसिड के बने हो सकते हैं और कोएंजाइम भी प्रोटीनेशियस नेचर वाले हो सकते हैं। ज्यादातर जगह पर वाटर सॉल्युबल विटामिन, कुछ जगहों पर फैट सॉल्युबल, बहुत रेयर जगहों पर अमीनो एसिड के डेरिवेटिव, तो कुछ जगहों पर इवन देयर मे बी सम अदर मॉलिक्यूल्स, दे कुड बी लाइक लिपोमाइड एंड हीम। Lipomide is needed for the activity of pyruvate dehydrogenase and heme is needed for the activity of various cytochromes. Such proteins are referred to as heme proteins, as well as also needed for the activity of catalase. So heme के साथ साथ often iron is also there. So this is the list of variety of coenzymes. So note down, अगर आप किसी अब तक आपने नोट डाउन नहीं किया है तो all are important. So now moving to little bit kinetics part. That is how the rate of reaction is influenced by increasing the substrate concentration. We will try to model mathematically. So we know that during enzyme kinetic reactions, an enzyme catalyzed reaction के दौरान एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है, कितना ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन कुड बी गिवन बाय रेट कांस्टेंट K1, बट बिकॉज एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में देयर आर वैरायटी ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस, हो सकता है कि वापस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स E+S में डिसोशिएट हो जाए, दैट इज द रिएक्शन इज opposite to the direction of K1, could be referred to as minus K1. So K1 rate constant represents the formation of ES complex, minus K1 represents the dissolution of ES complex into E+S. पर जरूरी नहीं ES complex E+S में ही dissociate हो, this could also dissociate into a free enzyme and a product. So there could be formation of free enzyme and then there could be a formation of some kind of product. And once an enzyme is free, now it will able to participate in a second round of reaction. The rate of product formation could be, let's say, given by rate constant K2.
ऑल्दो रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल, एंजाइम के साथ प्रोडक्ट बाइंड हो सकता है और ES कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, उसके लिए वी कैन यूज अ टर्म रेट कांस्टेंट K2। पर जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वह इनिशियल वेलोसिटी की बात करता है, और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टेस्ट ट्यूब में प्रोडक्ट है ही नहीं, टेस्ट ट्यूब में सिर्फ सबस्ट्रेट है, बाहर से आप फिक्स्ड अमाउंट का आपने एंजाइम ऐड किया और फिर रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट अगर पहले से है ही नहीं तो -K2 is not possible. So we will take an assumption that we are talking about an initial velocity, and we are talking about the initial velocity उस कंडीशन में फिर -K2 is not possible. So same thing could be represented over here. Enzyme plus substrate complex form a ES complex, which may result into enzyme plus product, where S is substrate concentration, E is enzyme concentration, ES is substrate, E enzyme substrate complex, P is the product, K1 minus K1 and K2 are rate constant. By taking various assumptions, Michaelis and Menton, they were able to derive an equation for observed velocity. कई सारे assumptions, कई सारी बातें माननी कि ऐसा ऐसा ऐसी कंडीशंस हो, उन बातों को अगर माना जाए तो एक माइकलिस और मेंटन ने इक्वेशन डिराइव की, दैट इज इक्वल टू V0 इक्वल टू V max S डिवाइड बाय Km प्लस S। V0 इनिशियल वेलोसिटी, V max मैक्सिमल वेलोसिटी है, S सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, Km पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, Km भी क्योंकि ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में सबस्ट्रेट ही ऐड हो सकता है, तो Km भी एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ही है, बट दिस इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव हाफ ऑफ V max। Km को मैथमेटिकली भी निकाला जा सकता है कि Km इज इक्वल टू द डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट दैट इज -K1 प्लस K2 डिवाइड बाय द फॉर्मेशन रेट कांस्टेंट दैट इज K1। तो Km इज बेसिकली, यहां पर हम एक नई टर्म भी बात कर सकते हैं, Km is a dissociation constant. This is a Michaelis-Menten constant. It is also a dissociation constant. So enzyme substrate complex का dissociation या तो K2 वाली डायरेक्शन में हो सकता है या इसका dissociation -K1 वाली डायरेक्शन में हो सकता है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर -K1 वाली डायरेक्शन में आया तो ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट वाली डायरेक्शन में जाएगा, और K2 वाली डायरेक्शन में गया तो ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट वाली डायरेक्शन में जाएगा। और फॉर्मेशन तो सिर्फ एक ही तरफ से होता था, फॉर्मेशन सिर्फ किधर किधर होता है, फॉर्मेशन इज बाय ओनली वन रेट कांस्टेंट दैट इज K1। so we can say that Km is a Michaelis-Menten dissociation constant which is equivalent to dissociation rate constant divided by an association rate constant. Now this equation V0 equal to V max S Km plus S, this is derived, this equation it has been derived by taking various assumptions. So what we are doing is that the variable parameter is substrate, कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज होने पर वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि V max कांस्टेंट है, Km भी कांस्टेंट है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेलोसिटी में चेंज आता जाएगा। इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए माइकलिस और मेंटन ने कुछ इंपॉर्टेंट assumptions लिए, and these important assumption is first that this equation is for initial velocity. This equation is for initial velocity means initially products are not there, and if products are not there, minus
K2 is not possible. Reaction will proceed only in फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करेगी, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए कुछ तो प्रोडक्ट होना ही चाहिए और टेस्ट ट्यूब प्रोडक्ट है ही नहीं, तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन कैसे होगी. तो आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर लेट्स से, तो यू हैव लेट्स से टेकन अ 10 टेस्ट ट्यूब. 10 टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, या माइकलिस और मेंटन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और इन सब के अंदर एक वेरिएबल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रख दी. सपोज यहां पर 0.1 मिलीमोलार, यहां पर 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 मिलीमोलार सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रख दी. सब में बफर है ताकि पीएच मेंटेन रहे, सबको सेम टेम्परेचर पे रखा. खाली सबस्ट्रेट है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट तेजी से नहीं होगा, नेग्लिजिबल रेट होगी. अब क्या करते हैं, हम इस सब के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंजाइम ऐड कर देते हैं, फिक्स्ड अमाउंट. जैसे टेस्ट ट्यूब 1 में एंजाइम हमने ऐड किया, इमीडिएटली रिएक्शन को मेजर करते हैं. ऐसे नहीं 3-4 मिनट बैठने के बाद हम रिएक्शन को मेजर करेंगे, नहीं, इमीडिएटली कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है पर सेकंड उसको मॉनिटर करना शुरू करते हैं. यहां पर कितना हो रहा है, फिर इसमें भी डाला इसकी वेलोसिटी. सो 10 टेस्ट ट्यूब्स व्हिच आर हैविंग वेरिएबल नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, सब के अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंजाइम ऐड किया, और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंजाइम ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि एक स्टेज के बाद और वेलोसिटी 8th में भी उतनी है, 9th में भी उतनी है, 10th भी उतनी है. नहीं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर अब कोई फायदा नहीं है, फिक्स अमाउंट ऑफ एंजाइम सब में ऐड कर. सो ग्राफिकली इस तरीके से कुछ कर्व आएगा. इधर की तरफ आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे, वेलोसिटी. 8th ट्यूब, 9th ट्यूब और 10th ट्यूब के अंदर वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है ज्यादा. एक 7th वाले लेवल से और ज्यादा सबस्ट्रेट रखने पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब एंजाइम जो ऐड कर रहे हैं दैट इज नाउ लिमिटेटिंग एज कंपेयर टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन व्हिच इज अवेलेबल. सो उन्होंने पहला अजम्पशन लिया कि वी आर गिविंग एन इक्वेशन फॉर इनिशियल वेलोसिटी. सेकंड जो उन्होंने अजम्पशन लिया कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, हर टेस्ट ट्यूब में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम की कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है. इवन हमने अगर 0.1 मिलीमोलार भी रखा है, तो सपोज एंजाइम की कंसंट्रेशन 1 नैनोमोलार है, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 1 मिलीमोलार, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन उससे कई गुना ज्यादा है. इन अदर वर्ड्स व्हाट यू वांट टू से इज दैट सबस्ट्रेट इज नॉट लिमिटेटिंग. एंजाइम की कंसंट्रेशन कंपैरिजन में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमने बहुत ज्यादा करके रखी है इन ऑल टेस्ट ट्यूब्स. मींस एंजाइम कांट से दैट हाउ आई एम गोइंग टू वर्क, सबस्ट्रेट इज नॉट देयर. नो, सबस्ट्रेट इवन इन द लोएस्ट टेस्ट ट्यूब or in the test tube number 1 where there is the lowest substrate concentration, still the substrate concentration is sufficiently very high as compared to the concentration of enzyme. These are the assumptions or conditions taken up by Michaelis and Menten. These conditions they may not be fulfilled in a biological system. Biological system में ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट जीरो ना हो. बायोलॉजिकल सिस्टम में हो सकता है कि सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा ना हो, सबस्ट्रेट की अमाउंट कम हो, तो वहां पर 100% माइकलिस मेंटन अप्लाई होगा, कोई जरूरी नहीं. बट इफ द कंडीशंस व्हिच आर गिवन बाय माइकलिस एंड मेंटन दे अप्लाइज, then we can use this kind of equation, that is V0 equal to V max S Km plus S. Another जो उन्होंने assumption ली, he said that कि ES का dissociation insignificant है. In other words, what he want to say is that जितना ES dissociate होता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में, या एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में, उतना का उतना ES कॉम्प्लेक्स वापस बन जाता है. यू गेट द सेम अमाउंट ऑफ ES. In other words, what we want to say is that concentration of ES complex
रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। टाइम के साथ साथ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, लेकिन टाइम के साथ साथ ईएस कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। ऑलमोस्ट ईएस कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम। दिस इज एक्स इज फॉर कंसंट्रेशन एंड दिस इज फॉर लेट्स से टाइम। That is, the formation of ES complex is almost equivalent to the dissociation of ES complex. The formation of ES complex is given by the rate constant K1 and the dissociation of ES complex is given by rate constant minus K1 and K2. So we can say that minus K1 plus K2 equal to K1, that is formation is equivalent to dissociation. और हमने ये भी कहा था कि dissociation constant क्या हो जाएगा Km, तो dissociation कराने वाली इक्वेशन कौन सी है, माइनस K1 प्लस K2 और फॉर्मेशन कराने वाली K1, इसलिए इसी को हमने K1 भी अभी थोड़ा टाइम पहले कहा था। देन अनदर अजम्पशन, सो ES डिस्ट्रीब्यूशन इज इनसिग्निफिकेंट, इन अदर वर्ड्स ये तो हमने यहां पे ले ली, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इज इन स्टेडी स्टेट, दैट इज इट रिमेन्स सेम। दिस इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट assumption. Another assumption, a very important assumption which was taken by Michaelis and Menton, is that out of these three rate constant K1, minus K1 and K2, the rate limiting step is the step catalyzed by K2. Generally rate limiting step वह step होती है which is slowest in cascade. माइकलस और मेंटन ने कहा कि ईएस कॉम्प्लेक्स तेजी से बनता है और ईएस कॉम्प्लेक्स वापस तेजी से ई प्लस एस में डिसोशिएट भी हो जाता है। अगर वह ई प्लस पी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ई प्लस पी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा वह डिपेंड करता है K2 के ऊपर। इसलिए क्योंकि वह स्टेप स्लो है इसलिए उसे रेट लिमिटिंग का, यानी लेट्स से एक रोड है, एक कार के पीछे दूसरी कार, तीसरी कार एक ही लाइन में जा रही है, सिंगल लेन रोड है, सभी कार एक के पीछे एक चलेगी, तो उस रोड पर जो सबसे लास्ट आदमी है वह अपने डेस्टिनेशन पर कब पहुंचेगा, वो जो बीच में तेज कारें दौड़ रही है उनके ऊपर या उस कार के ऊपर जो सबसे स्लोएस्ट है। व्हाट विल फाइंड दैट द पर्सन हु इज ड्राइविंग द कार विथ द स्लोएस्ट स्पीड इज डिसाइडिंग द रेट और द स्पीड ऑफ ऑल अदर कार्स हु आर behind that person. So rate limiting step is the step which is slowest in the cascade. और इनमें से सबसे स्लोएस्ट कौन सा है, K2. तो ES कॉम्प्लेक्स चाहे कितना भी बने उससे कोई तो फायदा नहीं है। फायदा तो तब होगा जब ES कॉम्प्लेक्स किसमें कन्वर्ट हो, E प्लस P में, क्योंकि वापस सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। So this is slowest step. This is also referred to as K2 को इसलिए हम K cat भी कहते हैं, क्योंकि फाइनली कितना कैटालिसिस होगा, कितना एक एंजाइम कितना सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा वह K2 के ऊपर डिपेंड करने लग गया, क्योंकि हम कह रहे हैं ES कॉम्प्लेक्स तो तेजी से बनता तो फिर कितना प्रोडक्ट बनेगा वह फिर K1 पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, K2 पे। इसलिए K2 इज ऑल्सो रेफर टू एज K cat। और अगर ये स्टेप फास्ट हुआ तो E फ्री हो जाएगा और एंजाइम फ्री हुआ तो वापस ये सेकंड टर्न ले पाएगा, वापस एक सेकंड बार सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो पाएगा। इसलिए इसको K2 को टर्नओवर नंबर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज टर्नओवर नंबर, कि एक सेकंड में एंजाइम कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा इस बात पर डिपेंड करता है कि एंजाइम ES कॉम्प्लेक्स E प्लस पी, एंजाइम फ्री, फिर सेकंड बार सबस्ट्रेट ES कॉम्प्लेक्स E प्लस पी, सेकंड सबस्ट्रेट फ्री, फिर वापस एंजाइम फ्री हुआ थर्ड सबस्ट्रेट के साथ। एक सेकंड में वो कितनी साइकिल कर पाएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि स्लोएस्ट स्पीड कौन सी है। तो स्लोएस्ट स्पीड कौन सी है, द स्टेप कैटलाइज्ड बाय K2. So that is assumption taken by Michaelis-Menten. अगर K1 भी स्लो होता तो फिर तो हम कहते हैं कि कितना प्रोडक्ट बनेगा वह K1 पर भी डिपेंड करता है और K2 पर भी, बट यहां पर उन्होंने assumption ये मानकर चला है कि K2 is the rate limiting step. So these are important assumption, इन सबको नोट डाउन करें। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है वह फ्रेम किया
जा सकता है. यू कैन गेट अ डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस. So what are the assumptions which were taken by Michaelis-Menten? So the equation is for initial velocity. He considered that substrate is not limiting, the concentration of substrate is more than enzyme, that dissociation of ES is insignificant, or in other words, the concentration of ES complex is in a steady state. Out of 3 rate constant K1 minus K1 and K2, the rate limiting step is carried by K2, which is also referred to as Kcat, or which is also referred to as turnover number. Then moving further, और आगे अब हम बात कर रहे हैं, that is moving, trying to define another term referred to as Km. So let's try to define what we mean by Km. So Km we have already defined in one of the way, and that is the Km is the dissociation constant for ES complex, and we have also, it is dissociation constant for ES complex. इसलिए हमने कहा था Km is equal to minus K1 plus K2 by K1, और हमने ये भी कहा था it is substrate concentration. Second way we have defined it, that it is the substrate concentration where V0 is equal to half of Vmax. So basically Km है तो क्या, तो Km is basically a substrate concentration. Substrate concentration ताकि जो ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी है वो कहां पर पहुंच जाए, हाफ ऑफ Vmax, 0.5 ऑफ Vmax, कुछ भी आप लिख सकते हैं, Vmax by 2, उसको अचीव करने के लिए जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. So basically Km, it tells you an affinity of enzyme for its substrate. ये एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी कितनी. एफिनिटी और Km में इनवर्स रिलेशनशिप है, इट इज हैविंग एन इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि Km is basically a dissociation constant. So if Km is more, it means dissociation is more, and if dissociation is more means affinity is less. और अगर Km कम है तो डिसोसिएशन इज लेस, और अगर डिसोसिएशन कम है तो एफिनिटी है वह ज्यादा है. तो बेसिकली Km इज a dissociation constant. Km is a dissociation constant for ES complex. और हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए Km की वैल्यू कांस्टेंट होगी. सो एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए नहीं बढ़ेगी. द Km वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट, एफिनिटी विल रिमेन कांस्टेंट. सो Km is the substrate concentration which is required to achieve half of Vmax. So same enzymes may have different affinity for different substrate. हो सकता है आपको बायोकेमिस्ट्री में 50% मार्क्स लाने के लिए 4 घंटे पढ़ने पड़ते हो, तो सेल बायोलॉजी में 50% मार्क्स लाने के लिए आपको 3 घंटे ही पढ़ना पड़ता हो. 4 घंटे पढ़ने पड़ रहे हैं, इसका मतलब वहां पर डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, आप आसानी से याद नहीं रखने पड़ रहे हो, इसलिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है.
सेल बायोलॉजी के लिए आपको 3 घंटे ही पढ़ना पड़ रहा है, लोअर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रखनी पड़ रही है। इसका मतलब सेल बायोलॉजी के लिए आपकी एफिनिटी ज्यादा है। तो पैरेलली आप इस तरीके से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। सो द सब्जेक्ट इन विच यू आर गेटिंग अ 50% मार्क्स without studying or studying a limited number of hours, it means you are having the maximum affinity for that particular substance, for that particular subject. जिस सब्जेक्ट को आप बहुत ज्यादा घंटे हार्स पढ़ते हैं और फिर 50% मार्क्स आता है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपकी एफिनिटी कंपैरेटिवली कम है। सो Km बेसिकली इट गिव्स यू एफिनिटी। हेक्सोकाइनेज की Km वैल्यू डी ग्लूकोज के लिए अलग हो सकती है, हेक्सोकाइनेज की Km वैल्यू डी गैलेक्टोज के लिए अलग हो सकती है, हेक्सोकाइनेज की एफिनिटी डी फ्रक्टोज के लिए कुछ अलग हो सकती है, हेक्सोकाइनेज की एफिनिटी एल ग्लूकोज के लिए एकदम अलग हो सकती है। तो Km इज बेसिकली एन एफिनिटी, लेसर इज Km, हायर इज अ एफिनिटी। तो हम कह रहे हैं कि 50% Vmax को अचीव करने के लिए हमें जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए उसे Km करना। इसको हम इस तरीके से भी वापस डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या थी, V0 इक्वल टू Vmax S Km प्लस S, और इसी को हम रीअरेंज कर सकते हैं V0 बाय Vmax इक्वल टू S Km प्लस S। हमें वेलोसिटी को कहां करना है, 50%। 50% मतलब अगर Vmax 2 है तो व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज, सपोज V0 इज हाफ ऑफ Vmax, ऐसा आपने अजम्पशन लिया। मतलब Vmax 2 है तो V0 आपने कितना लिया, 1। S Km प्लस S, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले आपके पास वैल्यू आ गई Km प्लस S इक्वल टू 2S, और Km वुड बी इक्वल टू 2S माइनस S, दैट इज Km इज इक्वल टू S। तो यही हम कह रहे हैं, Km क्या है, बेसिकली एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किसके लिए, कि अगर आपके पास जो ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी है उसको 50% तक पहुंचाने के लिए। और इस तरीके से आपसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सपोज इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज ट्वाइस ऑफ Km, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन Km के बराबर नहीं, Km से आपने डबल कर दिया, तो फिर वेलोसिटी कितनी होगी इन द टर्म्स ऑफ Vmax के कंपैरिजन में कितनी होगी। क्या अब वेलोसिटी V0, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम Km के बराबर रखते हैं तो वेलोसिटी हाफ पे पहुंच जाती है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ट्वाइस ऑफ Km करें तो वेलोसिटी क्या 100% हो जाएगी या 1 पर पहुंच जाएगी, नहीं। तो उसके लिए हम कैसे पता करें कि V0 कितनी होगी, क्योंकि आगे वेलोसिटी में उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं होगी, ग्राफ ऐसा फ्लैट होता जाएगा। आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन वापस बढ़ा रहे हैं पर वेलोसिटी में जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा नहीं हो पाएगा। इक्वेशन में वैल्यू रखें दैट V0 इक्वल टू Vmax S, ये हमारी इक्वेशन है, S बाय Km प्लस S, और X की जगह पर हमें वैल्यू कितनी रखनी है, व्हाट वैल्यू हैज टू बी प्लेस्ड इंस्टेड ऑफ S, S की जगह पर वैल्यू रख दो आप 2Km, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी V0 इक्वल टू Vmax 2Km Km plus 2Km, that is V0 equal to Vmax 2Km by 3Km, Km तो कट गया, you will say that V0 would be 2/3 of Vmax, that is V0 would be equivalent to, you can say 0.66 of Vmax। परसेंटेज में बात करें तो अभी 66% पर ही पहुंची। अगर आपके 4 हार्स पढ़ने पर 50% मार्क्स आ जाते हैं, अगर 4 हार्स पढ़ने पर आपके 50% मार्क्स आ जाते हैं तो 8 हार्स पढ़ते ही
100% मार्क्स नहीं आएंगे। अब आगे 50% से आगे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपने 4 हार्स में 50% मार्क्स, तो 8 हार्स डेली पढ़ना शुरू कर लिया, 66% मार्क्स आएंगे, एंड दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर क्लियरिंग अ सीएसआर जेआरएफ एग्जामिनेशन। और आप 12 हार्स पढ़ेंगे तो भी आपके 100% मार्क्स नहीं आएंगे। आप कैलकुलेशन में रखेंगे, यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को आप थ्राइस ऑफ केएम कर लें, यानी अगर 4 हार्स केएम है तो थ्राइस ऑफ केएम का मतलब दिन में 12 घंटे भी पढ़ना शुरू कर लें तो अभी आपके 100% मार्क्स नहीं आएंगे। आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो यू विल फाइंड दैट नाउ द मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट वुड बी 3/4 ऑफ वी मैक्स, मींस ऑलमोस्ट अराउंड 75%। तो इस तरीके से टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाओ, यू विल कीप ऑन गेटिंग अ मोर मार्क्स। बहुत ज्यादा पढ़ेंगे करेंगे तो 100% मार्क्स आ सकते हैं, और बहुत ज्यादा की कोई वैल्यू नहीं होती। So when you are going to get 100% marks, when you can say that you are going to study large number of hours. Okay, so this is about KM. Then moving to the how we represent KM graphically. So let's say this is an enzyme 1 and this is enzyme 2, and let's say the Vmax value of both these enzyme 1 and 2 is same. If this is Vmax, if we give us some unit, this is 10, then half Vmax would be 5. The substrate concentration which is required to achieve half Vmax for an enzyme 1 is 10, while this is the Km1 for an enzyme 1. Similarly, same half Vmax को अटेन करने के लिए एंजाइम 2 को जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए दैट इज 20. सो दिस इज Km2 फॉर एंजाइम 2. सो एंजाइम 1 के लिए Km की वैल्यू कितनी आई? 10. एंजाइम 2 के लिए Km की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 20. सो नाउ विच एंजाइम इज हैविंग मोर एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट? एक एंजाइम 50% ऑफ Vmax जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 10 हो तब पहुंच रहा है, दूसरा एंजाइम 50% ऑफ Vmax तब पहुंच रहा है जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 20 हो। तो ऑब्वियसली जो लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर 50% अचीव कर रहा है उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, जो कम हार्स पढ़कर 50% लेकर आ रहा है उसकी एफिनिटी ज्यादा हुई। सो लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर जो 50% पहुंच रहा है, this would be compared will have a high affinity, and we will say that enzyme 2 it is comparatively having a low affinity. Then defining another term, that is what is kcat or k or turnover number. So we have said that कि enzyme substrate complex जो enzyme plus product में convert होता है इसे ही turnover number कहा जाता है. This is referred to as turnover number. This is k1, this is minus k1 and so on. Why it is referred to as kcat? Because this is a rate limiting, so it is going to decide that how much product is going to get formed. It is also referred to as turnover number क्योंकि K2 अगर ज्यादा होगा तो ये एंजाइम फ्री होगा, और एंजाइम फ्री होगा तो ये नेक्स्ट टर्न कर पाएगा. इट विल एबल टू कैरी आउट अ नेक्स्ट टर्न. सो देन already we have studied that what is Vmax. So we can say that Vmax is when total enzyme 100% enzyme if they are moving in this direction, total enzyme अगर इस प्रोडक्ट वाली डायरेक्शन में जा रहे हो तो हम उसे Vmax कहेंगे. और we can say that Vmax would be equal to, प्रोपोर्शनल साइड हटाया, यहां पर लगा देंगे kcat by Et. यानी कोई एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन की मैक्सिमम रेट कितनी होगी वह दो फैक्टर पर डिपेंड करता है. एक, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच एंजाइम, हर एंजाइम की स्पीड क्या है. तो स्पीड ऑफ कैटलिसिस ऑफ एन इंडिविजुअल एंजाइम इज रेफर्ड टू एज kcat. और उस तरीके के कितने एंजाइम काम कर रहे हैं, हाउ मेनी एंजाइम्स, बोथ आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट वुड बी द मैक्सिमल रेट. That is, let's say at any kind construction site एक दिन में कितनी मीटर दीवार वॉल कंस्ट्रक्ट होगी वह दो फैक्टर पे डिपेंड करती है. फर्स्ट,
कि वहां पर कितने वर्कर्स डेप्यूट किए हैं, कितने वर्कर्स, एंड सेकंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ working of a single worker. If let's say there are 100 worker and each worker make a 1 meter wall daily, then you will say that the maximum speed of construction would be 100 meter per day. चाहे सबसे कंस्ट्रक्शन आप कितनी उससे ज्यादा बड़ा, उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, उससे और ज्यादा आपको मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ानी है तो आपको नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करने पड़े. सो वी मैक्स इज यू कैन से total activity. Total activity is Vmax and Kcat is an speed of single enzyme. एक एंजाइम की क्या स्पीड है उसे हम Kcat कहते हैं. Kcat को कैसे निकाला जा सकता है? तो Kcat न्यूमेरिकली इट कुड बी कैलकुलेटेड दैट इफ यू नो द मैक्सिमल स्पीड, टोटल स्पीड आपको पता हो, टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन पता हो तो आप Kcat निकाल सकते हैं. अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर डेली का कितना काम होता है और उसके लिए कितने लोग वहां पर डेप्यूट किए गए तो एक आदमी किस स्पीड से काम करता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. So similarly for enzyme you can calculate the Kcat value. So this is about the Kcat. Okay. इसके साथ Kcat से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई एंजाइम है वो फास्ट है या स्लो है. दैट कुड आल्सो बी आइडेंटिफाइड कि एंजाइम इज फास्ट और एंजाइम इज कंपैरेटिवली स्लो. जैसे हम बात कर चुके हैं कि Kcat डिपेंड किसके ऊपर करता है, Kcat डिपेंड्स अपॉन Vmax by Et. Now whether an enzyme fast or whether an enzyme is slow, that depends upon a Kcat. Vmax एंजाइम की स्पीड को नहीं बताता, Vmax कलेक्टिव स्पीड है. एंजाइम फास्ट है या स्लो है दैट इज डिक्टेटेड ऑन बेसिस ऑफ Kcat. Kcat जिसे टर्नओवर नंबर भी कहते हैं. सो हियर द टर्नओवर इन दिस टेबल, turnover number of some important enzymes is given. For example, catalase is one of the very fast known enzyme जो H2O2 को break down करता है. catalase का turnover number 4 into 10 power 7 per second है. Means लगभग 40 मिलियन या लगभग 4 करोड़ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है कैटालिस, वह भी एक सेकंड में. सो दिस इज द कन्वर्जन. टर्नओवर नंबर इज 4 करोड़ per second of substrate molecule transformed into a product when we use a per mole of enzyme. एक मोल एंजाइम लें तो दिस इज द स्पीड. देन इफ वी टॉक अबाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो आरबीसी में और कई जगहों पर और काम करता है, उसका अगर हम एक मोल एंजाइम लें तो रेट वुड बी almost around 1 million. 1 mole of enzyme can convert 1 million of substrate into a product per second. Acylcholinesterase का टर्नओवर नंबर 2.5 ट्रांसफर पर सेकेंड पर मोल ऑफ एंजाइम है. लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का लगभग 1000, मींस कंपैरेटिवली वेरी स्लो एंजाइम है. यूरिएस फिर भी 10,000 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है. कीमोट्रिप्सिन की तो और भी टर्नओवर नंबर कम है. रूबिस्को which is one of the most ancient and abundant enzyme on earth has a turnover number of 3, means it is a very slow enzyme. लाइसोएंजाइम उससे भी स्लो है. और ज्यादातर जो राइबो एंजाइम्स हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, राइबो एंजाइम्स दैट इज व्हेन आरएनए एज अ कैटालिटिक एंजाइम,
Riboenzymes and restriction enzymes are very slow. इतने स्लो कि उनकी जो टर्न ओवर नंबर है, that is often turnover number is represented in form of substrate transformed per minute instead of per second, because they are very slow enzyme. Then, so in other words, fast enzymes, they have high turnover number. Slow enzymes, they comparatively has a lesser turnover number. Now, turnover number of restriction endonuclease is very slow. Almost it will come out to be around 60 per minute, and if you convert into a second, it would be almost 1 per second. Why it is so slow? So for this, you must have a little bit idea about what restriction enzymes do. Restriction enzymes, they restrict entry of foreign DNA in bacteria. That is, they recognize some site on foreign DNA and then put cleavage, depending upon whether it is a 4 base pair cutter or it is a 6 base pair cutter and so on. 4 base pair cutter, they recognize 4 base pair sequence, that could be like G, G, C, C and so on. 6 base pair cutters are those which will recognize 6 base pair sequence, like it could be G, A, T, T, C and so on. They recognize and cut on a foreign DNA. अगर ये बात है तो फिर तो एंजाइम को बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बाहर से डीएनए इंजेक्ट हुआ बैक्टीरिया में वायरस का, वैसे उसको कट लगा दे, मौका ही क्यों दे उसको मल्टीप्लाई होने का। बट फिर भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किसी भी सिस्टम में देखें, माइक्रोबियल सिस्टम में, दे आर वेरी स्लो। तो डेफिनेटली इसका मतलब फास्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होने की वजह से देयर मस्ट बी अ सम काइंड ऑफ डिसएडवांटेज, किसी न किसी तरीके का डिसएडवांटेज होना चाहिए। तो व्हाट कुड बी दैट डिसएडवांटेज? द डिसएडवांटेज इज दैट द सीक्वेंस recognized by restriction enzymes are also present in host DNA, but often methylated by modification machinery, so that restriction enzyme cannot recognize them. यानी फॉरेन डीएनए प्रोसाइट मिथाइलेटेड नहीं होती और सेल्फ के प्रोसाइट मिथाइलेटेड होती है, इसलिए सेल्फ को कट नहीं करते, फॉरेन को कट करते हैं। लेकिन लेट्स से दिस इज सम काइंड ऑफ डीएनए where this recognized site is methylated, okay, where restriction enzyme recognized. But if there is a replication से एक डीएनए स्ट्रैंड से 2 डीएनए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, सपोज दिस इज द टेम्पलेट डीएनए, लेट्स से दिस इज द टेम्पलेट डीएनए एंड दिस इज अ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, ये डीएनए नया सिंथेसाइज हुआ,
दिस इज अ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। इस कंडीशन में क्योंकि जो नया डीएनए सिंथेसाइज हुआ है, इस नए डीएनए के ऊपर अभी मिथाइलेशन नहीं हुआ। मिथाइलेशन नहीं हुआ मतलब रेस्टिंग एंजाइम इसके ऊपर कट कर सकते हैं, यानी रेस्टिंग एंजाइम खुद के ही डीएनए के ऊपर कट लगा देंगे, पर रेस्टिंग एंजाइम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि रेस्टिंग एंजाइम्स दे आर स्लो एंजाइम्स। रेस्टिंग एंजाइम्स स्लो एंजाइम है, मतलब there is a chance for a working of modification enzymes। कौन से एंजाइम काम करते हैं, तो हम कौन से एंजाइम काम कर लेंगे यहां पर, मॉडिफिकेशन एंजाइम्स वो काम कर लेंगे। मॉडिफिकेशन एंजाइम्स दे आर फास्ट and what they will do is they will allow the methylation even on newly synthesized strand। जो newly synthesized strand है उसके ऊपर भी methylation कर देंगे। कंडीशन वुड बी समवॉट लाइक दिस, यहां पर भी अब मिथाइलेशन हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं जब तक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सोकर जागते हैं तब तक तो दोनों ही साइड्स मिथाइलेट हो चुकी होती है। ये साइड भी मिथाइलेट हो चुकी होती है, ये वाली मिथाइलेट हो चुकी होती है। दैट इज सिंस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे आर स्लो, वह काम करे उससे पहले पहले मॉडिफिकेशन एंजाइम्स। एंड व्हाट आर मॉडिफिकेशन एंजाइम्स आर मोस्ट ऑफन they are DNA methyl transferases, and these DNA methyl transferases they are fast. So the reason is rest enzyme they are slow, thus they allow DNA methyl transferases to act so that host DNA can be methylated। अगर फास्ट रशियन एंजाइम इवोल्व कभी हुआ भी होगा तो उसने खुद के बैक्टीरिया के ऊपर कट लगा दिया होगा, उससे उस बैक्टीरिया की सर्वाइवल कम हो गई होगी। इस तरीके के म्यूटेंट फॉर्म्स आगे पास नहीं हो पाएंगे। सो स्लो एंजाइम्स इट अलाउ होस्ट मॉडिफिकेशन मशीनरी टू एक्ट, उसमें मदद करता है। देन कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर that is referred to as spacity constant। Spacity constant or also referred to as catalytic efficiency। Spacity constant or catalytic efficiency that depends on two important kinetic parameters, that is depends upon the ratio of k cat by Km। This is basically the spacity constant। This is also referred to as catalytic efficiency। Basically this k cat by km ratio it gives you information about the properties of free enzymes and free substrate। That is, this is, let's say this is a free enzyme, this is a free substrate, how fast they get convert into an ES complex, and not only कितना ES complex में बनेगा नहीं बनेगा Km पर डिपेंड करता है, and not only this is important, another factor is also important, that is k cat, that is how of them is converted to an enzyme plus product। So सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इफ सबस्ट्रेट हैज टू बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, उस सिनेरियो के अंदर इफ सबस्ट्रेट हैज टू बी कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट, उस सिनेरियो के अंदर टू थिंग्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ES complex, because once ES complex has been formed then only a product would be formed। ज्यादा एफिशिएंटली सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके इसके लिए Km की वैल्यू कम होनी चाहिए। Km जितना कम होगा उतनी सबस्ट्रेट की एफिनिटी
या एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए ज्यादा होगी, मोर ईएस कॉम्प्लेक्स वुड बी फॉर्म्ड। ज्यादा ईएस कॉम्प्लेक्स बना तो ईएस कॉम्प्लेक्स शुड नॉट डिस्ट्रीब्यूट बैक इनटू ई प्लस एस, इट शुड कन्वर्ट टू ई प्लस पी, यानी के कैट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। के कैट की वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी ज्यादा हो। सो इस हाफ तक कितना ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन अ के एम, एंड हाउ मच ईएस कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू प्रोडक्ट, इट इज डिपेंड अपॉन के कैट। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम हो उस कंडीशन में के एम भी इंपॉर्टेंट बन जाता है और के कैट तो इंपॉर्टेंट है ही। तो कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वह इस बात पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ के कैट बाय के एम। के कैट बाय के एम का रेशियो ज्यादा है, मतलब के कैट ज्यादा होगा, के एम जितना कम होगा रेशियो ज्यादा आएगा, और रेशियो ज्यादा आने का मतलब द स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट इज मोर। Same enzyme can act on multiple substrate, but you will find that the enzyme is substrate specific and stereo specific. That is, out of the given choices, it will act efficiently on one of the substrate. Enzyme is substrate specific or stereo specific. It doesn't mean that it is all or none. It is recognizing one substrate, it is not recognizing other. No. Enzyme based substrate specific or stereo specific means it is recognizing its actual substrate more efficiently as compared to the alternative substrate. But how we will identify that hexokinase D glucose के ऊपर एक्ट कर सकता है, D galactose पर एक्ट कर सकता है, D fructose पर एक्ट कर सकता है, D fructose L glucose के ऊपर भी एक्ट कर सकता है, बट आउट ऑफ दीज डिफरेंट सबस्ट्रेट किस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ये एंजाइम सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है, तो उसके लिए हमें के कैट बाय के एम रेशियो पता करना पड़ेगा। जो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को सबसे एफिशिएंटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा उसका के कैट बाय के एम रेशियो सबसे ज्यादा होगा। आप देखेंगे कि जो फास्टेस्ट नोन एंजाइम्स हैं जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एटसेट्रा, उनका भी के कैट बाय के एम रेशियो इज नॉट हायर देन 2 इंटू 10⁸, इससे ज्यादा नहीं होता। इससे ज्यादा स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट या के कैट बाय के एम रेशियो इसलिए नहीं है बिकॉज दिस इज द लिमिटेटिंग वैल्यू विच इज डिसाइडेड बाय द रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि ऑब्वियसली किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो पहले यहां पर आना तो पड़ेगा एक्टिव साइट में, क्योंकि जब तक वो एक्टिव साइट में नहीं आया तब तक वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो सबस्ट्रेट तक कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए व्हाट इज नीडेड इज डिफ्यूजन। सो हाई कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में एंटर करेगा। अब डिफ्यूजन की रेट जितनी होगी मैक्सिमम उतना के कैट बाय के एम रेशियो हो सकता है, दैट इज 2 इंटू 10⁸। इससे ज्यादा और स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होती बिकॉज नाउ दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट क्लोज टू अ डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रेट ऑफ एनकाउंटर। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि के कैट बाय के एम इन ऑर्डर ऑफ 10⁸ इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रेट ऑफ एनकाउंटर, और इससे ज्यादा स्पेसिफिसिटी या कैटालिटिक एफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती। जैसे कि यहां पर कुछ एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स की के कैट और के एम की वैल्यू रिप्रेजेंट की गई है। सो दिस इज द टेबल विच इज रिप्रेजेंटिंग के कैट एंड के एम वैल्यू। सो दीज आर सम ऑफ द एंजाइम्स यू कैन सी हियर। This is acetylcholine esterase, which is again very fast enzyme. इसका this is Km वैल्यू जो काफी कम है और K कैट वैल्यू 10⁴ ऑर्डर में है। स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट आप निकालेंगे दैट इज K कैट बाय Km। तो आपके पास 1.4 इंटू 10⁴ डिवाइड बाय 9.5 इंटू 10⁻⁵ इस तरीके से स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट है।
कार्बोनिक एनहाइड्रेस अगेन वेरी फास्ट एंजाइम, इसको 10 पावर 6 डिवाइड बाय 10 पावर 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू वापस 10 पावर 8 के आसपास आ जाएगी. सो दैट्स व्हाई वी सेड कार्बोनिक एनहाइड्रेस इट हैज अ वेरी हाई स्पेसिसिटी कांस्टेंट, ऑलमोस्ट अराउंड 10 पावर 8. कैसे निकालेंगे? 10 पावर 6 मान लें, 1 को अगर भूल भी जाए, 1.2 को भी अगर फॉरगेट करें तो 10⁻², तो 10⁻² ऊपर की तरफ आएगा तो 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 2 हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू 10 पावर 8. सो इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रेट. सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज उससे भी और फास्ट एंजाइम है एसओडी, इट इज ऑल्सो वेरी फास्ट एंजाइम. ये 10 पावर 6 है और ये 10 पावर -4, इट इज फास्ट. Catalase is also fast enzyme. So some fast, or we can say some enzymes which are having a high catalytic efficiencies are acetylcholinesterase, carbonic anhydrase, superoxide dismutase and catalase. Now coming to the point that what we mean by rate limiting step, although we have discussed it when we were talking about Michaelis-Menten equation. What is rate limiting step? So a step which is slowest in metabolic cascade is referred to as rate limiting step, because this will decide overall rate of substrate to end product formation. Rate limiting step which is slowest, and how we will identify that this step is slowest, which will have, it could be identified by either having high Km. High Km means low affinity for substrate, or it could be due to a low K cat value, that is low turnover number. Okay, low K cat or low turnover number, or even it could have a lesser negative delta G0. जितनी ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जीरो रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी. लेसर नेगेटिव डेल्टा जीरो और वी कैन से मोर पॉजिटिव डेल्टा G0, तो वो रिएक्शंस वो स्टेप रेट लिमिटिंग हो, या विच विल हैव यू कैन से लो ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी. These are some of the criteria जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी स्टेप रेट लिमिटिंग. So let's say कि as a hypothetical example, there is a A which may convert to B, B may convert into let's say C, C may convert to D, and D may convert into a finally end product E. And some rate of transformation is given. Let's say 100 molecule of this can convert, 75 molecule of this could be converted, 10 molecule of this could be converted, and 50 molecule of this could be converted into E per second. If amount of A is very high, what would be the amount of substrate which would be produced per second? Per second कितना end product बनेगा? So substrate A is very high, वह limiting नहीं है, तो end product कितना बनेगा? तो हम कैसे पता करेंगे? तो आंसर वुड बी ओनली 10. वाई 10? जबकि ये तो 50 कन्वर्ट कर सकता है, तो इतना 10 क्यों? द रीजन इज दैट ऑल्दो दिस एंजाइम इज एफिशिएंट, बट C से D कन्वर्जन 10 ही होगा, तो D to E कन्वर्जन भी 10 ही होगा. इसको 50 कोई दे ही नहीं रहा है. When 50 substrate is not available, how it is going to convert a 50 molecules of D into E? It is getting only 10. So now the rate of transformation would be only 10. So the step which is slowest among the cascade become our rate limiting step. जो भी सबसे slow step है, that will
that would be referred to as pacemaker, or that would be referred to as rate limiting step. That would be your answer. These are various parameters by which it could be identified कि कौन सी rate limiting step. Now moving to the Lineweaver-Burke equation. The problem with a Michaelis-Menten equation is, if we talk about Michaelis-Menten equation, the problem is that if we draw an equation, sorry, draw a graph according to this equation between a two variable parameter, that is substrate, between a variable parameter substrate, and if you observe a velocity, what we find is initially there is straight line, finally it is like this, and then a Vmax is attained. Now in this, since it is a rectangular hyperbolic curve, ये एक rectangular hyperbolic curve है, इसलिए it is difficult to precisely calculate Vmax कि Vmax यहाँ पर है या Vmax इस जगह पर है. इस Vmax को पता करना बहुत मुश्किल है. So where actual Vmax lies, इसको पता करना बहुत मुश्किल है. Vmax गड़बड़ है, और Vmax गड़बड़ है तो हाफ Vmax भी प्रॉब्लमेटिक है, और हाफ Vmax प्रॉब्लमेटिक है तो Km के बारे में भी हम कुछ नहीं बता सकते. So in other words, what we can say that in Michaelis-Menten equation, it is difficult to precisely locate Vmax and Km on graph. So it is necessary that somehow this rectangular hyperbolic curve should be converted to a straight line. So this Michaelis-Menten equation is converted to a Lineweaver-Burke equation. Purpose is that you can get a straight line. It is necessary that we must convert a Lineweaver-Burke equation into a Lineweaver-Burke equation. Michaelis-Menten equation to Lineweaver-Burke equation. Straight line से फायदा क्या होगा कि then we can calculate Km and Vmax precisely. Km और Vmax को precisely calculate कर सकते हैं. So how to obtain a straight line equation from this Michaelis-Menten equation? So that is very simple. Lineweaver-Burke equation is simply double reciprocal. It is a double reciprocal of Michaelis-Menten equation. तो बहुत सिंपल सा काम है. तो जो Michaelis-Menten equation है उसका डबल रेसिप्रोकल लेना है. What is Michaelis-Menten equation? That is V0 equal to Vmax S Km plus S. इसका हमें डबल रेसिप्रोकल लेना है. That is reciprocal on both the sides. It would be somewhat like this is Michaelis-Menten equation, और Lineweaver-Burke equation के लिए हमें क्या करना है, इसका डबल रेसिप्रोकल, that is
1 by V0 would be equivalent to Km plus S Vmax S. This is, you can say, reciprocal on both sides. What we have done is reciprocal on both sides. ये 1 बाय V0 हो गया, इधर की टर्म में Km जो बॉटम पर था, डिनोमिनेटर था, वह न्यूमरेटर बन गया, जो न्यूमरेटर था वह डिनोमिनेटर पर आ गया। अब तो सिंपली इस इक्वेशन को एक्सपांड करना है। दैट इज, फर्दर दिस इक्वेशन कुड बी एक्सपांडेड लाइक दिस। 1 by V0 would be equivalent to Km Vmax 1 by S प्लस, ये सारी वैल्यू इसके नीचे रख दी, प्लस S Km प्लस S, सॉरी S Vmax प्लस S, ये वैल्यू इसके नीचे भी हमने प्लेस कर दिया। ऐसा हमने सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट कट गया, हमारे पास 1 by V0 इक्वल टू Km by Vmax 1 by S प्लस 1 by Vmax। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, वेर this is to be plotted on y-axis, this is m, this is x plus c। जहां पर y-axis पर आप प्लॉट करोगे, y-axis जो ग्राफ प्रिपेयर किया जाएगा उसमें y-axis पर आप प्लॉट करेंगे 1 by v0, x-axis पर आप प्लॉट करेंगे, x-axis पर प्लॉट करेंगे 1 by s। सो माइकल्स मेंटन इक्वेशन में प्लॉट सबस्ट्रेट और V0 के बीच में था, यहां पर हम जो प्लॉट बनाएंगे दैट इज बिटवीन 1 by V0 एंड 1 by S बिकॉज इट इज अ डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। जो स्लोप है लाइन की दैट वुड बी गिवन बाय, स्लोप या m जिसे कह रहे हैं, दैट इज वुड बी गिवन बाय Km by Vmax एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट, y एक्सिस इंटरसेप्ट इसको हम C से लिख रहे हैं, that would be given by 1 by Vmax। So note down this. So the purpose of converting Michaelis-Menten equation into a Line-Weaver-Burk equation is to convert this rectangular hyperbolic curve into a straight line, so that with precision we can calculate the value of Vmax and Km. So if we use this particular equation to make a curve, what you will get is a almost straight line. So equation is 1 by V0 equal to Km by Vmax 1 by S plus 1 by Vmax. This is Line-Weaver-Burk equation. This is to be on y-axis, this is the slope, this is on x-axis, and this is c-intercept. So you can see on y-axis we are plotting 1 by V0,
on x axis you have to plot a 1 by s. You will get a straight line. इस तरीके से हमारे पास straight line आएगी. You will get almost a straight line. And ये straight line यहाँ 0 से start हो, कोई हमेशा जरूरी नहीं है. Straight line इस point से start हो रही है. तो जो intercept है y axis पर, the intercept on y axis is given as 1 by v max. यहां पर हमारे पास क्या पता चल गया है, 1 by v max. इसी लाइन को अगर हम थोड़ा और बैक साइड में एक्सटेंड करें तो 1 बाय एस वाली एक्सिस पर हमारे पास क्या जाएगा, 1 बाय के एम. बट दिस इज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो इट इज कमिंग ऑन नेगेटिव साइड, सो वी विल रिप्रेजेंट अ सिंबल माइनस. स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लाइन की स्लोप इस तरीके से होगी या लाइन की स्लोप इस तरीके से होगी या लाइन की स्लोप इस तरीके से होगी. स्लोप को डिसाइड करने वाला कौन है, तो स्लोप इज डिसाइडेड बाय रेशियो ऑफ km by vmax. यानी how straight, how the ascending or how rapidly a line will rise, that depends upon a slope. So this is the curve. इसको ड्रॉ कर लें, प्लॉट कर लें, आप अपने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर लें. सो अगर हम पैरेलली बात करें तो पहले हमारे पास इस एक्सिस पर सबस्ट्रेट था, माइकल्स मेंटन इक्वेशन में इस एक्सिस पर वेलोसिटी थी. यू आर गेटिंग अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व. अब सबस्ट्रेट की जगह पर आ गया है 1 बाय सबस्ट्रेट, वेलोसिटी की जगह पर हो गया है 1 बाय v0. पहले y एक्सिस पर यू आर गेटिंग अ v max. y एक्सिस पर हमें क्या पता मिल रहा था, v max. अब हमें y एक्सिस पर मिल रहा है 1 बाय वी मैक्स, क्योंकि ये रेसिप्रोकल प्लॉट है. और हाफ वी मैक्स के लिए जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, km. यानी x एक्सिस पर हमें क्या मिल रहा था, सबस्ट्रेट वाली एक्सिस पर हमें मिल रहा था km. तो अब हमें 1 बाय सबस्ट्रेट वाली एक्सिस पर मिलेगा 1 बाय km, बट ये पॉजिटिव साइड में नहीं मिल रहा है, ये नेगेटिव साइड में मिल रहा है. सो इट वुड बी रेफर्ड टू एज माइनस 1 बाय km. एंड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल डिपेंड अपॉन km बाय v max. So this is the straight line graph, Lineweaver-Burk plot. So the benefit of this plot is अब आपको Vmax या Km को ग्राफ पर ढूंढना नहीं है, डायरेक्टली ग्राफ पर मिल रहा है. That is if you want to calculate, आपको you have to obtain Vmax. तो आपको क्या करना है, टेक रेसिप्रोकल ऑफ y एक्सिस इंटरसेप्ट. जो y एक्सिस इंटरसेप्ट है उसका रेसिप्रोकल ले लो. तो टू ऑब्टेन Vmax व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ y एक्सिस इंटरसेप्ट. फॉर एग्जांपल यहां पर कुछ वैल्यूज दे रखी है, 1 2 3 4 5 6, कुछ यूनिट में वैल्यू दे रखी. इस ग्राफ से हमें क्या पता चला कि 1 बाय वी मैक्स की वैल्यू कितनी है, तो 1 बाय वी मैक्स की वैल्यू 4 है. तो फिर वी मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कह रहे हैं वी मैक्स की वैल्यू पता करनी है तो उसका रेसिप्रोकल ले लो. रेसिप्रोकल किसका ले लो, 4 का. तो 4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाय 4. दैट वुड बी योर आंसर. तो 4 है, इसका रेसिप्रोकल ले लो, यू विल गेट वी मैक्स. So directly you are not getting Vmax, but you are getting a 1 by Vmax on a, directly you are getting a 1 by Vmax on a plot. But 1 by Vmax का अगर reciprocal लोगे, then you will get a Vmax value. Similarly, to obtain Km from this curve, क्योंकि डायरेक्टली Km नहीं मिल रही है, हमें क्या मिल रही है, -1 बाय Km. लेट्स से इधर तरफ कोई वैल्यू -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर कोई -4 है और यहाँ पर कोई -5. हमें क्या मिल रहा है इस ग्राफ के हिसाब से, -1 बाय Km इज इक्वल टू -5. ये हमें मिल रहा है इस पॉइंट पर. तो टू ऑब्टेन Km व्हाट वी हैव टू डू इज यू हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ x एक्सिस intercept and
मल्टीप्लाई इट विथ -1 ताकि वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल -1/km की वैल्यू कितनी है इस ग्राफ में? -5। तो km कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट स्टेप 1 इज take reciprocal of this, it will become -1/5, and step second is -1/5 should be multiplied with -1/5 should be multiplied with -1, so value would be 1/5, and if value is 1/5 means value is 0.2. So in this way you can obtain the value of Vmax or value of Km. So y एक्सिस इंटरसेप्ट का डायरेक्ट रेसिप्रोकल लिया, Vmax मिल गया। जो x एक्सिस इंटरसेप्ट है उसका रेसिप्रोकल लेकर -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास Km की वैल्यू आ गई। So this is a Lineweaver-Burke plot. Then another way of converting a rectangular hyperbolic curve into a straight line was suggested by Haynes and Wolff, referred to as Haynes-Wolff plot. According to them, their method is more easier as compared to Lineweaver-Burke equation. देखते हैं इनका मेथड कैसे ईजियर है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में वो इजी है या नहीं। तो उसको समझने के लिए वी विल स्टार्ट विथ अ लाइनवीवर-बर्क इक्वेशन। लाइनवीवर-बर्क इक्वेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अ लाइनवीवर-बर्क इक्वेशन। दे सेड दैट मल्टीप्लाई दिस लाइनवीवर-बर्क इक्वेशन विथ सबस्ट्रेट, मल्टीप्लाई LB इक्वेशन विथ सबस्ट्रेट। ऐसा करते ही अब हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई, सबस्ट्रेट बाय V0 इक्वल टू Km Vmax। सबस्ट्रेट यहां पर भी रख देते हैं, सबस्ट्रेट प्लस सबस्ट्रेट यहां पर भी Vmax। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मल्टीप्लाइड दिस with substrate on all the sides. It was set. ऐसा करने पर बस एक तो सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट कट गया, ऐसा करने पर सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट यहां पर कट गया। अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई, दैट इज सबस्ट्रेट बाय V0 इक्वल टू Km 1 बाय या Km बाय Vmax प्लस 1 बाय Vmax। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा करने पर भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। दिस इज नाउ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। दिस इज y axis, this is a y axis intercept, this is the slope, and this you have to draw it on x axis. So Haynes-Wolff plot के हिसाब से x axis पर आपको क्या लेना है? सिंपली सबस्ट्रेट। अब आपको रेसिप्रोकल नहीं लेना है, x axis पर आपको सबस्ट्रेट प्लॉट करना है। हाँ, y axis पर आपको क्या प्लॉट करना है? तो y axis पर यू हैव टू प्लॉट s बाय V0। देन द y एक्सिस, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या आएगा? x एक्सिस इंटरसेप्ट, जैसे y x एक्सिस इंटरसेप्ट, x एक्सिस सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट वाली एक्सिस पर क्या आएगा? Km। y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होगा? y एक्सिस इंटरसेप्ट पर, तो y एक्सिस पर हम सबस्ट्रेट बाय V0, तो सबस्ट्रेट वाली एक्सिस पर क्या आता है? Km। V0 वाली एक्सिस पर क्या आता है? Vmax। So intercept on y axis would be Km by Vmax, and slope
would be given by 1 by Vmax. So according to them, their method is simple because in a straight line, directly x axis intercept gives you a km, डायरेक्ट km की वैल्यू देता है. No doubt, you have to calculate simply to calculate Vmax. What you have to do is you have to take reciprocal of slope. Simply reciprocal लो slope का आपके पास Vmax, क्योंकि slope is 1 by Vmax और 1 by Vmax का reciprocal लोगे तो it will become Vmax. तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो हेंसवुल्फ प्लॉट में. एक्स एक्सिस पर आपको सबस्ट्रेट लेना है, वाई एक्सिस पर सबस्ट्रेट बाय V0 लेना है. स्लोप है दैट इज गिवन बाय 1 बाय Vmax. स्ट्रेट लाइन होगी तो वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा दैट वुड बी Km बाय Vmax. सबस्ट्रेट में माइनस साइड में वैल्यू आ रही है दैट इज माइनस Km आ रही है. तो माइनस वैल्यू है, इसलिए टू कैलकुलेट you can say to calculate Km, simply multiply x axis intercept with -1. तो आपके पास सीधी Km की वैल्यू आ जाए. सो सपोज आपके पास वैल्यू ऐसे -1, -2, -3, -4, तो माइनस Km इज इक्वल टू -4 है. तो Km कितना हो गया? तो Km 4 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस कट गए. या -4 को -1 से मल्टीप्लाई कर लो. और सपोज गिवन स्लोप इज गिवन टू इज लेट्स से 2, तो Vmax कितना होगा? तो हम कैसे पता करेंगे? तो वी नो दैट स्लोप इज 1 बाय Vmax. इसका मतलब क्या दे रखा है? 1 बाय Vmax इज इक्वल टू 2. 1 बाय Vmax इक्वल टू 2, देन Vmax वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट वुड बी 1 बाय 2. या Vmax ऊपर की तरफ जाएगा तो 2 नीचे की तरफ आ जाएगा. इस तरीके से इंटरचेंज करके भी आपको कर सकते. सो दैट इज हेंसवुल्फ प्लॉट, where on x-axis you are drawing substrate, on y-axis you are plotting a substrate by V0. From a x-axis intercept you are getting a minus Km value, and from a slope you are getting a 1 by Vmax. Another straight line transformation is Eddy-Hopsey plot. So whether it's a Lineweaver-Burk, or whether it is a Hensholt plot, or whether it is a Eddy-Hopsey plot, the purpose of all three plot is to convert a rectangular hyperbolic curve into a straight line. So Eddy-Hopsey equation is derived from Michaelis-Menten equation. This is a Michaelis-Menten equation. So how to derive this? So first he said cross multiplied this. तो ये भी Michaelis-Menten ही होगी. V0 equal V0 Km plus S equal to Vmax S. Simply we are opening this V0 Km plus V0 S equal to Vmax S. Up to now it is up to now it is a Michaelis-Menten equation. Now we are moving toward Eddy-Hopsey plot. What is to be done? So divide it by substrate. तो अब हम इसको सबस्ट्रेट से डिवाइड करें तो अब इक्वेशन हो जाएगी V0 Km डिवाइड बाय सबस्ट्रेट प्लस V0 S डिवाइड बाय सबस्ट्रेट Vmax S डिवाइड बाय सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट कट गया, सबस्ट्रेट कट गया. So what you will get is, now you can say that you can write it like this: V0 by S Km plus V0
इक्वल टू वी मैक्स। और इसी को हम रीअरेंज कर कर इक्वेशन को V0 के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। तो V0 वुड बी इक्वल टू, you can say if this value goes on this side, it would symbol would be minus km, हम पहले लिख देते हैं V0 by S plus V max। This is a straight line equation where this is to be plotted on y, this is m, this is x, this is c, only there is a minus sign. That is, now on y axis you will get plot a V0, x axis पर आप प्लॉट करेंगे V0 by S, y axis intercept would be obviously V max। x axis intercept हालांकि जरूरत नहीं है हमें, पर फिर भी x axis intercept क्या होगा कोई पूछे तो V0 वाली एक्सिस पर आ जाएगा V max और S वाली एक्सिस पर आ जाएगा K। स्लोप is giving you minus Km। so here what you are doing is directly we are getting V max from y axis, कोई रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है। एंड टू ऑब्टेन Km simply multiply slope with -1, so that value will become पॉजिटिव। ओके, सो वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि स्लोप कैसा है नेगेटिव, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई करो, सिंपली -1। सो ईडी हॉफसी प्लॉट के अंदर किसी भी वैल्यू को, यानी Km या Vmax में से किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं। तो ईडी हॉफसी प्लॉट से आप Vmax पता कर सकते हैं, Km भी पता कर सकते हैं, K कैट भी। अगर Vmax आपको पता है और एंजाइम की कंसंट्रेशन भी पता है तो आप K कैट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि K कैट या टर्नओवर नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है, Vmax बाय ET। सो प्लॉट से आपने Vmax निकाल लिया एंड एंजाइम कंसंट्रेशन फिक्स है, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन भी आपको नोन हो, तो आप इस प्लॉट से आप क्या पता कर सकते हैं, K कैट की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। बट फॉर दिस यू मस्ट नो द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। So this is the graphical representation of ED Hopsy plot। ये ED Hopsy plot का graphical representation है, जहां पर x एक्सिस पर आप प्लॉट कर रहे हैं V0 by S, y एक्सिस पर V0। इस बार अब तक सारी लाइन ऐसे से ऊपर स्ट्रेट जा रही थी, इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। इस बार लाइन है वह, उसका स्लोप नेगेटिव से नीचे की तरफ आ रही है। स्लोप इज गिवन बाय -Km, y एक्सिस पर V0 है, V0 वाले एक्सिस पर आपके पास Vmax मिल रहा है। तो डायरेक्टली यू आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ Vmax। क्लियर? तो Vmax तो डायरेक्टली यहीं से मिल गई, कुछ करना ही नहीं है। और स्लोप की जो वैल्यू है उसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास Km की वैल्यू है वह भी आ गई। ठीक है, तो दीज आर 3 डिफरेंट ways by which a rectangular hyperbolic curve could be converted into a straight line। देन जो एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर कैसे किया जाता है, यानी एंजाइम कितना सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है उस यूनिट का नाम ही यूनिट है। 1 unit of an enzyme is defined as that
when 1 micromole of substrate transformed into a product in 1 minute, it is referred to as 1 unit. So note down this, what we mean by 1 unit. In simple words, 1 unit is micromole per minute. That is when 1 micromole of substance or substrate could be converted into the product in 1 minute. We will say that the amount of an enzyme added is 1 unit. Now we are assuming that substrate is not a limiting factor. तो कितना एंजाइम ऐड करें कि रेट को 1 माइक्रोमोल पर मिनट अचीव किया जा सके, तो उसे 1 यूनिट कहा जाएगा. अगर आपको 5 माइक्रोमोल पर मिनट कन्वर्शन करना तो 5 यूनिट इस्तेमाल करें. अगर आपको 100 माइक्रोमोल पर मिनट ऐड करना है तो आप 100 यूनिट्स का एडिशन करें. सो 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म्ड or product formed per minute under standard condition or defined condition, this would be referred to as 1 unit. So what we mean by 100 unit? 100 unit means when a enzyme concentration is sufficient enough that it can convert 100 micromole of substrate into a product in 1 minute. But neither micromole nor a minute is a standard unit. They are not SI unit. ऑल्दो लैब कंडीशन में जो सबसे ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल की जाती है, दैट इज यूनिट, बट दैट इज नॉट अ एसआई यूनिट. जो एसआई यूनिट है दैट इज अ कीटल, जो काफी बड़ी यूनिट है. दैट इज 1 कीटल इज व्हेन 1 मोलार और वी कैन से 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, नॉट 1 माइक्रोमोल, इससे 10⁶ टाइम्स ज्यादा. 1 mole of substrate is converted into a product, transformed into product, and that also not in a 1 minute, in 1 second. तो उसे 1 कीटल कहा जाएगा. सो कहां पर 1 माइक्रोमोल और टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा था 1 मिनट में, तो उसे हम 1 यूनिट कह रहे थे. इट वॉज बीइंग रेफर्ड टू एज 1 unit. 1 micromole is converted to a product in 1 minute, it was 1 unit, but 1 mole, that also in 1 second, then it is referred to as ketal. So you can note down 1 ketal is 1 mole of substrate transformed or product formed per second under defined conditions. तो उसे 1 ketal कहा जाएगा. We can convert कीटल into unit. So calculate कि एक कीटल में कितनी यूनिट्स आएगी. कन्वर्ट करें और बताएं. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? कीटल इज मोलार पर सेकेंड एंड यूनिट इज माइक्रोमोल पर सेकेंड. कैसे कन्वर्ट करें? तो पहला 1 कीटल मीन्स you can say that it is 1 mole per second. Second step is you can say it means 10⁶ माइक्रोमोल पर सेकेंड, क्योंकि एक मोल के अंदर 10⁶ माइक्रोमोल्स आते हैं. थर्ड स्टेप वुड बी 1 सेकंड में इतना, तो 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में से 60 टाइम्स ज्यादा होगा. सो यू विल से दैट
60 into 10⁶ माइक्रोमोल पर मिनट। एंड माइक्रोमोल पर मिनट क्या कहलाता है? माइक्रोमोल, सॉरी माइक्रोमोल, मोल पर सेकंड से हमें किसमें कन्वर्ट करना है? माइक्रोमोल पर मिनट। और माइक्रोमोल पर मिनट को हम क्या कहते हैं? यूनिट। सो यू कैन से दैट आंसर वुड बी 60 into 10⁶ units, or you can say that 6 into 10⁷ units. So you can say that one kettle has 10⁶ into 10⁷ units. So एक केटल बहुत बड़ी यूनिट है। एक केटल का मतलब 6 करोड़ यूनिट, 6 करोड़ यूनिट्स, and you will never say that add 6 crore units. It is a very large, huge amount of asset. Often practically तो लैब कंडीशंस में हम एंजाइम की कंसंट्रेशन ऐड करते हैं, दैट इज अराउंड 100 यूनिट और 200 यूनिट और 500 यूनिट्स, और उसको कीटल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कंसंट्रेशन बहुत कम आएगी। सो मोर कन्वीनियंट यूनिट इज for enzyme activity is unit, but if needed it could be converted into a ketal value, उसको कीटल वाली वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो आज के लेक्चर्स में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की है। वापस इन चीजों को रिवाइज करना। सबसे पहले हमने कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है वह पता किया है। देन व्हाट आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंजाइम। देन वी learned that how enzymes they lowers activation energy. We have also studied that what kind of interactions they are involved in enzyme and substrate. Then we have studied that how enzyme activity is influenced by substrate concentration, temperature and pH. After that we have also studied the nature of interaction between enzyme and substrate with a lock and key theory and induced fit hypothesis. Then we have also focused on 6 different classes of enzyme. What are important cofactors? Cofactors में inorganic cofactors की क्या लिस्ट है, organic cofactors की क्या लिस्ट है, यानी coenzymes, and some coenzymes are prosthetic group. फिर हमने enzyme kinetics के बारे में बात की। इन enzyme kinetics हमने Michaelis-Menten इक्वेशन को पहले डिराइव की या उसको हमने पता किया। उसके लिए there were some assumptions. Then from Michaelis-Menten equation we should know what we mean by Km, what we know understand by Kcat. Then हमने डिस्कस किया सबस्ट्रेट स्पेसिसिटी के बारे में, जिसे कैटालिटिक एफिशिएंसी भी कहा जाता है, that is Kcat by Km ratio. And we has said that even fastest known enzyme they have a Kcat by Km ratio around 10⁸, which is equivalent to a diffusion controlled rate. Then the problem with this Michaelis-Menten equation is that it is rectangular hyperbolic. So we have converted to a straight line, and there are 3 different ways by which we can convert to a straight line. One is Lineweaver-Burk, then it was Haynes-Wolff, and last is Eadie-Hobson. And last little small topic what we have taken is that what are the units to measure the enzyme activity, and there are 2 different units. Convenient, which is utilized in lab, is unit itself, while SI is the ketal. So this is about, you can say, this part is like मैं इतना पढ़े, पर चीज़ों को मैं जैसे मैं पहले बता रहा था बार बार रिवाइज जरूर करें, उनको रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो वेरी सून वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर कल हम वापस मिलेंगे तो हम एंजाइम इनिबिशन के बारे में बात करेंगे, हम एलोस्टिक एंजाइम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। So we will discuss about them. Okay. So thank you once again.